mention against my name in revised list of business for today. Dr. Bharti Parveen Pawar. Sir, with your permission, I raise today on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Shri Shantanu Thakur. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 1G of today's revised list of the business. Thank you, sir. Dr. Munspara Mahendra Bhai. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Shri Pankaj Chaudhary. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं संविधान के अनुच्छेद 51 खंड 1 के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पहला, भारत के निरंतर महालेखाकार परीक्षक का प्रतिवेदन CBIC ACS GST एप्लीकेशन के आयकर लेखा परीक्षक संघ सरकार राजस्व विभाग अप्रत्यक्ष कर माल और सेवा कर 2023 का प्रदर्शन संख्या 3। दूसरा, मार्च 2021 के समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन धारा 281 ख के अधीन आयकर विभाग द्वारा निर्धारित संपत्ति कुर्करी पर विशिष्ट अनुपालन लेखा परीक्षा संघ सरकार राजस्व विभाग प्रत्यक्ष कर 2023 का प्रदर्शन संख्या 4। तीसरा, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार 2022 का प्रतिवेदन संख्या 3 और 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय लेखा परीक्षक प्रतिवेदन जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1। Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 27th of March 2023 considered and accepted the recommendations made by the Rajya Sabha in clause 174 of the Finance Bill 2023 at its sitting held on 27th March 2023. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, Shri Vivek Thakur. Respected sir, I rise to present the following reports in English and Hindi of the department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports as mentioned against my name. I lay it on the table of the House. Statement by Minister Shri Hardeep Singh Puri. Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 15th report, 17th Lok Sabha of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs on demand for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. I thank you, sir. Motion for election to the Spices Board, Shrimati Anupriya Singh Patel. Chairman, sir, with your permission, I move the following motion. So the House is not in order, but I would fulfill my confidential responsibility. With your permission, I move the following motion that in pursuance of Section 33B of the Spices Board Act 1986, read with Rule 41B and Rule 51 of the Spices Board Rules 1987, this House do proceed to elect in the manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be the member of the Spices. Thank you. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. Honorable members, Rule 267. Take your seats. Take your seats. Take your seats. Take your seat. Notices under Rule 267. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Rule 267. Take your seat.
से गन, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, कुछ भी हवा निकल सकती है। आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, मेरे निर्णय का इंतजार कीजिए। Stands adjourned till 2 p.m. today. All right, so both the houses have been adjourned till 2 p.m. and it's yet another day where we see how papers were flung at the speaker. Unruly scenes yet again inside the parliament. So yet another day when we see showdown inside the parliament. Sloganeering and ruckus that continued by the opposition leaders. So both the houses of the parliament that have been adjourned till 2 p.m. this after unruly scenes were seen not just in the Rajya Sabha but in the Lok Sabha as well. This visuals that came in yesterday also similar scenes were seen today as well, where you saw how the papers were flung at the speaker's chair. So yet another day when the fruitful discussion inside the parliament could not take place. Remains to be seen how the day really pans out in the latter part. But both the houses having been adjourned till 2 p.m. after the ruckus and sloganeering continued by the opposition. In fact, today as well you saw how the opposition leaders were seen throwing papers at the speaker's chair. So the ruckus that continued inside the parliament in the Rajya Sabha and the Lok Sabha, with the opposition raising the JPC demand and saying that questions need to be answered by the central government. As we speak, the visuals are on your screens right now of how the papers were flung at the speaker's chair as sloganeering and ruckus continued. In fact, same slogans were raised in the Rajya Sabha while Jagdeep Dhankar there tried to maintain peace in the House of the Parliament. But the House there having been adjourned till 2 p.m. Remember, similar scenes were seen yesterday as well when papers were flung at the speaker's chair, and it's yet another day similar scenes unfolding. The question here rising as to how to ensure that there is a proper and a fruitful discussion that happens inside the parliament. This, of course, in the backdrop of the Congress that continues with its protest. It's day 2 of the Congress protest, which is taking place across the country. And as we speak, there's no fruitful discussion which is happening in the parliament. Unruly scenes that were seen inside the parliament, both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Both the houses having been adjourned till 2 p.m. after papers were flung at the speaker's chair. Let's take a word from Piyush Mishra as well, who's there tracking the parliament very closely. Piyush, if you can take us through the details of this, which are the opposition parties who are part of this unruly behavior? We see it's yet another day of papers being flung at the speaker's chair. All right, before I go across to Piyush, let's take a word from BJP's RP Singh also. Mr. Singh, the question here arising that how to ensure that there is a proper fruitful discussion which happens in the parliament, because it's yet another day, another such scene unfolded in the parliament, papers thrown at the speaker. Well, the opposition is not able to make a difference between Jantar Mantar and the parliament. I mean, they think they're as good as Jantar Mantar, and what they are supposed to do in Jantar Mantar, they are doing here. The protest in outside parliament is different. Inside, there's a rule which parliament works, and they are not behaving by the rule of the parliament. They think they're like, I mean, if you see the parliament look like some school or some college class which is there. This is very sad, and especially throwing papers and paper balls at the speaker or the chairperson of the house reflects that they are not in mood to run the parliament. They are not in mood to... Yes, and Mr. Singh, that's precisely the point. On one side, the opposition continues with its rant that there is no proper debate inside the parliament. But the paradox here being that it's the opposition in itself that is part of this unruly behavior inside the parliament. Yes, you're right. I mean, and showing black flag to the chair and
not allowing the chair to function. This shows that they are not in mood to carry on with the proper debate, and then only thing is they come and do press conference outside about the Parliament not functioning, or they're not allowed to speak inside, where they are not in mood to speak inside. They're not in mood to raise questions and issues in the Parliament, and this will reflect on their next elections also. Let's be clear, they have come down to less than 50 as almost 50 as a number, but next time people will vote them out altogether, because people who are watching this are not going to vote for such people. And Mr. Singh, yes. More details are just coming in of this unruly, unparliamentary behavior that was seen on the floor of the House. We understand black cloth was also thrown at the Speaker, which proves to a point that Congress was part of this unruly behavior where they threw papers at the Speaker of the House. As I can see on your TV screen, it is the Congress MPs who are taking initiative, creating their ruckus, not only throwing papers, also throwing some black clothes which they have brought along. And again, I mean, they have to abide by the rule of the Parliament. And if the Parliament takes tomorrow, the chair takes cognizance and takes strict action, then they'll go and pay a victim card that we say we have been checked out of the Parliament for certain days or certain period. All right, Mr. Singh, thank you for giving us your response. So absolutely unruly behavior. There you see on your screens how papers were flung at the Speaker's chair. In fact, not just papers, a black cloth was also thrown at the Speaker, which goes on to prove that Congress was part of this unruly behavior. Remember, it's a black protest being observed by the Congress across the country. So protest not just outside the Parliament, but on the floor of the House as well, where you see several of these opposition leaders throwing a black cloth at the Speaker of the House. All right, to the other big story we've been tracking very closely. We're now getting in the first response of Union Minister Smriti Irani, who has said that a proper response would be coming in from the Ministry of External Affairs as well, after United States has come out in support of Rahul Gandhi, saying that United States is closely monitoring the Rahul Gandhi case. So even the United States, that is now echoing the lobby sentiment from what it appears, United States trying to lecture India over the Rahul Gandhi case, saying that United States is closely monitoring the Rahul Gandhi case. In fact, a response that's also coming in from the Union Minister, Smriti Irani, who has said that a proper response would be given by the Ministry of External Affairs on the statement that has come in from the US State Department, where they've said that the country is closely monitoring the Rahul Gandhi case. Remember, this comes exactly 24 days after Rahul Gandhi called for foreign intervention while he delivered those lectures in the UK. Ma'am, on disqualification of Rahul Gandhi, Vedant Patel of the US Department has said that... I think the appropriate response, an appropriate response will be given by the MEA. But it is intriguing for me that if you look back at Rahul Gandhi's position in England, appealing to powers across the world to intervene in India, I hope MEA can give a response to this which is to your satisfaction. But this statement compels me to reflect on Rahul Gandhi's position, where he implored that every nation in the world should intervene in Indian democracy. All right, so there you heard Smriti Irani responding to Republic's question on the statement that has come in from the US State Department, where they've stated that the United States is closely monitoring the Rahul Gandhi case. In fact, on that note, let's once again listen into what Union Minister Smriti Irani had to say. She says that the statements are intriguing to her and that an appropriate response would be given by the ME as well. Ma'am, on disqualification of Rahul Gandhi, Vedant Patel of the US Department has said that... I think the appropriate response, an appropriate response will be given by the MEA. But it is intriguing for me that if you look back at Rahul Gandhi's position in England,
appealing to powers across the world to intervene in India. I hope MEA can give a response to this which is to your satisfaction. But this statement compels me to reflect on Rahul Gandhi's position, where he implored that every nation in the world should intervene in Indian democracy. All right, so there you heard Smriti Irani, the first government reaction that is coming in on the US State Department on Rahul Gandhi defamation case, saying that the United States is closely watching this case developments. This, of course, remember, after Rahul Gandhi has been disqualified as an MP after he made those remarks way back in 2019 in Karnataka. In fact, we're also getting a response from the BRS where they've called out the US, calling it a meddling on part of the United States. We are joined by BRS Member of Parliament K. Keshav Rao. Keshav sir, now we are getting to know that US Deputy Spokesperson Vedant Patel has stated that US is closely watching Rahul Gandhi's court case. What is your view on this? See, there can be two views into this. If Patel has said it, under what capacity, under what law, under what rule he is saying that, we must find out. Even if you found out that, you must know two things in this. Number one, is it that because no foreign government or no foreign country can interfere with any legal case. So that is done. What we heard about he said the US and Europe are oblivious. There are challenges to my democracy. My democracy, the Indian democracy, is facing challenges. This is true. Is anybody denying that? Now, he also said India is a mother of democracies. So that is a statement. Yes. Can you doubt that or object to that? No. Third is that India will solve its own problems, internal problems. That statement also I have seen on the TV. Now fourth, but he said it is facing challenges, but these two countries, Europe is a Europe Union, they are oblivious of it. When they said oblivious, the NGOs or few of the associations or even the government departmental things, they have departmental things, the way they maintain the index, rights indexes. In that they would like to, I don't know what scope they have, in that they might be watching, they might be seeing, they would like to know about India. But do you think it is not like, does it not tantamount to them interfering into our internal affairs? Both of us are talking. If somebody gives it in the video in Delhi, it is not interfering with us. If they are interfering with anything, that is objectionable. That is interference. So we don't know what he is trying to do. He just said there is a statement that India is facing challenges. I don't know what kind of challenges he has talked. So any country must know. Our foreign officers there would certainly know the situations in those countries. So definitely a case of clear meddling on part of the US. The fact that the United States State Department has issued a statement on Rahul Gandhi's defamation case. In fact, we're getting in a response from the former JNK Deputy Chief Minister as well, Kavinder Gupta, who has said that this is a wrong statement that's been given by the US representative and that US should not be interfering in India's affairs. अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने राहुल गांधी को लेकर के जो टिप्पणी की है सरासर गलत है। यह भारत का आंतरिक मामला है। अमेरिका को इस प्रकार से दखल देना ठीक नहीं लगता और उसको यह समझना चाहिए भारत की कोर्ट ने, जिसका हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं, उनका ये ऑर्डर है, उनका ये फैसला है और अमेरिका इस प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जिस प्रकार से कोर्ट ने कल्प्रिट ठहराया है और अपनी जबान पर उनका संयम नहीं था, तो ये भारत का आंतरिक मामला है। और विदेश में जाकर के विपक्षी पार्टियां इस प्रकार की कोशिश करेंगे तो ये कोई भी सहन नहीं करेगा। अमेरिका को अपने लफ्ज और अपने शब्द वापस लेने चाहिए।
All right, so there you heard a reaction that's coming from the former J&K Deputy Chief Minister Kavinder Gupta, who says that it is a wrong statement to have been given by the US representative and that US should not meddle in India's internal affairs. So that's a response coming in from several of these leaders. It's the same sentiment that seems to be echoing across the country. The BRS as well calling out the US, saying that US must not interfere in India's affairs. All right, on to a quick 1-minute report. Showdown continues on the streets of the Kenyan capital as anti-government protests continue to rage on. Here's a quick 1-minute report. The streets of Kenya's capital Nairobi remain deserted, and most businesses shut as anti-government protests entered the second week. Protests in the capital city turned into tribal clashes as groups of people charged at each other, pelting stones. In one part of the Kenyan capital, hundreds of men from the Luo tribe clashed with the rival men from the Nubian community. Kenya's opposition is leading the protests against the rising cost of living and calling for President William Ruto's resignation. And as Kenya braces for fresh protest, tensions continue to simmer in the Kenyan capital. Agency report for Republic TV. And coming up on the other side, the latest from Uttar Pradesh, Mafia Don Atiq moved from Sabarmati jail to Prayagraj to be produced in court today. Saturday onwards only, the Congress is staging the nationwide protest is going on by the youth Congress leaders all over the country over the disqualification of Rahul Gandhi from the lower house of the parliament, with the flags of Rahul Gandhi and Indian National Congress in their hands, who are protesting here at Mandi House. Several protesters now, they have taken the three-wheeler to go to Jantar Mantar, was the exact place where the youth Congress protest was called for. But they started their protest from outside Himachal Bhavan only. Divide, divide, divide. The opposition and the lobby did it during CA. They tried to do it again when Afghans were being evacuated. Tonight it is time to ask them why their secularism comes with a limited comfort zone. देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पे अशरफ को यहाँ पे ले जाया जा रहा है। आप देखिए लाइव तस्वीरें यहाँ पे रिपब्लिक आपको दिखा रही है। बरेली जेल से अशरफ को प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। Dramatic visuals coming from here at Jantar Mantar as the Congress youth protesters, Karyakartas are being detained by Delhi police officials and para forces over their protest here at Jantar Mantar, where they were trying to march and the for the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom of expression.
Days after Rahul Gandhi sought foreign intervention, the US now intervenes. The United States of America comes out in support of Rahul Gandhi, lectures India about democratic values. Smriti Irani takes on Rahul Gandhi in an unrelenting attack, calls Rahul politically frustrated. From back-to-back meetings to black protests, the opposition is in a huddle while Parliament logjam continues. The mafia don Atiq Ahmed is moved from the Sabarmati jail to Prayagraj, will be produced in court. Worried about the 2024 elections, is the opposition in the lobby hoping for an Israel-type situation in India? Good morning and welcome. You're watching live and breaking on Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. Now, as the Parliament logjam continues, complete unruly scenes have played out in the lower house of the Lok Sabha, with opposition leaders flinging papers at the chair for a second day in a row. Now, the BJP is staging a protest march demanding Rahul Gandhi's apology for his anti-India remarks. Now, pictures on your screen, of course, are of the ruckus that played out in both houses of Parliament. The Lok Sabha currently adjourned till about 2 o'clock this afternoon, and ruckus, of course, also being reported in the Rajya Sabha. Now, opposition parties, about 17 in number, have been essentially not allowing Parliament to work. They have asked for a JPCP to be formed in the Adani issue. Now, apart from that, of course, we've also seen unrelenting protests from the opposition over Rahul Gandhi's disqualification. Anuj is reporting on this. He joins us live from outside Parliament. Anuj, good morning. Anuj, give us a sense of what we are expecting today. Is it going to be an absolute replay of what we've seen in the past? You know, given the fact that the opposition at this point in time, at least, does seem to be extremely resolute in their demands. Well, what we are expecting today is the repetition of the same, and that's something what we have seen in the Parliament also. We have seen the ruckus in both the houses, whether being it in Lok Sabha or whether being it in Rajya Sabha. At this point in time, let me give it a sense what is happening right outside the Parliament. This is the Bharatiya Janata Party leadership, the OBC leaders of Bharatiya Janata Party who were protesting over here at the Vijay Chowk. Right now, briefing the media. We'll try and get in word. I'll just put my mic over there so that we can clearly get in word. कभी उनको अपमानित करते हैं कि सूट बूट का प्रधानमंत्री है, तो कभी उनको अपमानित करते हैं कि ये तो चौकीदार चोर है, कभी किसी तरह से बात करके उनको अपमानित करने का प्रयास किया है। ये लोकतंत्र है, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, कोई राहुल गांधी ने नहीं बनाया। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछड़ी जातियों को नाम कोट करके, उनको बदनाम करके, उनको किस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये कतई भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। We are cutting across to news that's just coming in. The Delhi High Court is pronouncing its judgment in the Delhi Police's plea against the discharge of Sharjeel, Imam, Safura Zargar, Asif Iqbal, Tanha and 8 others in the 2019 Jamia violence case. The court has now said that prima facie, as seen in the video, the respondents were the first in line of the mob. They were raising slogans against the Delhi police and were violently seen pushing the barricades. The right to peaceful assembly is subject to reasonable restriction, and acts of violence and violent speech are not protected. So that is the latest that we are getting in the Jamia violence case. We are given to understand that essentially this is looks like that the main accused in this case have been asked to face charges. The court has said that rioting and unlawful assembly is clearly seen in the pictures and the videos that have
emerged out of the incident. Now, the court has said that prima facie, as seen in the video, the respondents were the first in line of the mob. Sambhav is reporting on this. He joins us on the phone line. Sambhav, good morning. Tell us more, please. Well, the Delhi High Court has very categorically made it clear that there is no denial of the right to freedom of speech and expression. However, it should be peaceful and there should be a reasonable restriction, and the state has all the rights to uphold that reasonable restriction. That's what the Delhi High Court has very categorically said. Well, this Delhi High Court order came in the light of an appeal made by Delhi police in the Delhi High Court against the trial court's order, which had discharged Sharjeel Imam and others All right, I'm going to have to interrupt you there, Sambhav. Let's just go quickly across to Rhythm to understand what this essentially means for all these people. Rhythm, does this now mean that they face charges in this case? Absolutely, Nupur. This is the big breaking news that's coming in. The Delhi High Court has set aside the trial court's decision to discharge Sharjeel Imam, Safura Zardar, Asif Iqbal Tanha, and others in the Jamia violence case. They have framed charges against them, and that's the breaking news, Nupur. Charges have today been framed against Sharjeel Imam under various provisions of the IPC. The judgment was passed on the Delhi police's plea that has been against the trial court order that has discharged the accused in the 2019 Jamia violence. Now, Justice Varnakanta Sharma of the Delhi High Court, while pronouncing the verdict, has made two very important observations. She says the right to peaceful assembly is subject to reasonable restrictions and the acts of violence or violent speeches are not protected. She also says, prima facie, as seen in the video, the respondents were in the first line of the mob. They were raising slogans of Delhi Police Murdabad. They were violently pushing the barricades while referring to some of the accused. Remember earlier, ASG Sanjay Jain had made arguments with the Delhi Police. On Feb 4th, the trial court had discharged Sharjeel Imam, but today, the Delhi High Court has set aside the trial court order. Charges are going to be framed against Sharjeel Imam and others. This is, remember, Nupur, in 2019, the Jamia Millia violence case. We at Republic TV were present there. The FIR is now alleging rioting and unlawful assembly at that time. The police then in 2020 had filed a charge sheet. A second supplementary charge sheet has been filed and a third one. Finally today what's really happened is, it's been stated that no matter what was stated in the court, today advocates Rajat Nair and Dhruv Pandey, who appeared to the Delhi police, have been able to clearly establish before the Delhi High Court that violent speeches cannot be protected. Charges today being framed against Sharjeel Imam in the Jamia violence case. And the court is very, very clearly said two important points, like I said. We're waiting for the order copy. But right to peaceful assembly is subject to reasonable restrictions. Acts of violent speeches are not protected. Now, earlier, of course, Rhythm, the accused 11 people were discharged by the trial court on the 4th of February. However, it had framed charges of unlawful assembly and rioting against Muhammad Ilyas. Now, does this now mean that those 11 will be charged with the same offences, that is unlawful assembly and rioting, along with Muhammad Ilyas? So, just break down today's judgment for our viewers, Rhythm. Well, yes. So today, look at what's happened is the court has framed charges against 9 accused. Let me actually tell you, framing charges is a very serious part of the trial. This is after a lot of discussion and deliberation, and after hearing in great detail, the Delhi High Court has come to this conclusion. It has partially discharged others from various offences, but has framed charges against 9 accused, including Sharjeel Imam, Asif Tanha, and Safura Zardar under IPC. The court has also discharged some people, but like I said, the biggest point is that the court has said two things. That prima facie, they say, we have seen videos, and they say that these accused were in the first line of the mob. They were raising slogans of Delhi Police Murdabad. They were violently pushing the barricades. The court also says the right to peaceful assembly is subject to reasonable restrictions, and acts of violence and violent speeches are not protected. In fact, Nupur, I would like to say Republic TV was very much present at Jamia, and we ourselves were manhandled by the crowd that was there. So we saw firsthand what had happened, what the Delhi police is indicating. When it comes to these people, it is very, very clear that prima facie, they had raised slogans of Delhi Police Murdabad, and they had violently pushed the barricades. And therefore, the violent speeches made by them are not protected.
Oh yes, absolutely. So as Rhythm is pointing out, we will now see the framing of charges against about 12 accused in this particular case. The court has very clearly said that these people were seen in the video, and prima facie it appears that a case can be filed against them. Rhythm continues to be with us on this broadcast now. Rhythm, in the trial court, of course, there were certain remarks that were made, and that is also something we understand that the Delhi High Court has passed some observations on. There have been observations by the Delhi High Court, and trial, Nupur, has already begun in this case. There was earlier a seditious case in which Sharjeel Imam had granted bail, but because of this particular case also being there, he continues to be in jail. But we remember when there was the JNU student Sharjeel Imam, he had been booked in the 2019 Jamia violence case earlier also. And he was granted bail, but the court had discharged them earlier, the trial court. But today the court has set aside the trial court order and said the charges will continue to be framed against these people. The moot question that the court was seeing is about how there was an environment of corruption and havoc, disruption and havoc that had been created. The police had registered several FIRs at that time. There was a clash between people protesting against the CAA. Then finally, I remember in 2019 at the Aligarh Muslim University and the Jamia, there was a threat to cut off Assam, the rest of Northeast from India by Imam. So all these factors taken together, the court has said charges will be framed against them. All right, Rhythm Bhardwaj, our legal editor, joining us. Thank you very much for those details. And here's a quick look at what else is making news this morning. The gangster Atiq Ahmed will be produced in Prayagraj's MP MLA court at 11 today. Well, it would have happened already. Now, Ashraf and Atiq will be produced before the court, and it is likely to pass an order in the 17-year-old kidnapping case that's been filed against them. A new row erupted late last week after Rahul Gandhi's disqualification as a Lok Sabha MP following his conviction in the 2019 Modi surname case by the Surat court. The Congress party has been protesting the disqualification across states, culminating in a day-long Sankalp Satyagrah on Sunday at Rajghat. A special meeting has been convened at the MCD headquarters today to discuss and deliberate on the civic budget. As required by norms, the civic budget is yet to be cleared, and the date for that is the 31st of March. Earlier, the MCD had passed the schedule of taxes and the civic budget for 23-24 on the 15th of February. The BJP's National President JP Nadda will host a dinner for OBC Morcha MPs of the party today. The dinner will be held at 8 o'clock at Delhi's Western Court Annex, and we are given to understand that the MPs will be guided on how to work for their community better. Upping the ante over Rahul Gandhi's disqualification from the Lok Sabha, the Congress will hold press conferences in 35 cities for 2 days starting today on democracy disqualified, while also highlighting other issues such as the Adani matter and the alleged clean chit to fugitives. According to officials, senior Congress leaders will address press conferences in 35 cities today and tomorrow. Leaders of at least 18 opposition parties met at the residence of Congress Chief Mallikarjun Kharge on Monday and alleged that the BJP-led government is destroying democracy. They also decided to continue with their campaign against Modi government. Among the parties that were represented at the meeting were the DMK, the NCP, the JDU, the BRS, the CPIM, the AAP, the TMC, the NC and others. A two-story building in the Badarpur area collapsed after a fire broke out inside the building. According to officials, no casualties were reported. The Indian Navy will conduct the first of its kind passing out parade today in Odisha's INS Chilka. The first batch of soldiers recruited under the Agnipath scheme will successfully complete their training with the POP. Defence Minister Rajnath Singh on Monday said that he will attend the India-Africa Army Chiefs Conclave in Pune. The inaugural edition of the conclave on the sidelines of AF Index 23 is being organised in Pune today and tomorrow. The second G20 Infrastructure Working Group meeting under G20 Indian Presidency is scheduled to take place in Visakhapatnam in Andhra Pradesh for 2 days starting today. Now, the conference will be held in Visakhapatnam under the theme of the economic cities of tomorrow. You are with Republic, and still to come.
The United States comes out in support of Rahul Gandhi, lectures India about democratic values. And Smriti Irani takes on Rahul Gandhi in an unrelenting attack. Divide, divide, divide. The opposition and the lobby did it during CA. They tried to do it again when Afghans were being evacuated. Tonight it is time to ask them why their secularism comes with a limited comfort zone. देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पे अशरफ को यहाँ पे ले जाया जा रहा है। आप देखिए लाइव तस्वीरें यहाँ पे रिपब्लिक आपको दिखा रही है। बरेली जेल से अशरफ को प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। Dramatic visuals coming from here at Jantar Mantar as the Congress youth protesters, Karyakartas are being detained by Delhi police officials and para forces over their protest here at Jantar Mantar where they were trying to march, and the visuals could clearly be seen as they were protesting against the disqualification of their leader Rahul Gandhi from the Lok Sabha. And now we'll show you that many youth leaders of the Congress have already been detained by the Delhi police official and are taken to the nearby police station. Saturday onwards only the Congress is staging the nationwide protest is going on by the Youth Congress. Welcome back. You are watching Republic TV and we are cutting across the pictures that we are getting of Atiq Ahmed being produced before a court. As we've been talking about since this morning, gangster turned politician Atiq Ahmed and his brother Khalid Azim, also known as Ashraf, are being produced in a court in connection with the 2006 kidnapping of Umesh Pal, a witness in the BSP MLA Raju Pal murder case, who was killed last month in an attack allegedly orchestrated by the two. Now, the brothers, of course, were brought to the Naini Central Jail Monday after a long road journey from two separate prisons. Security has been tightened around the court premises as well as the jail complex where the accused are lodged. Now, pictures on your screen are of the police vehicle that I assume is bringing the two accused to court. Now, Ashraf and Ahmed have also been accused of being involved in a conspiracy while both of them were in prison to kill Umesh Pal. Now, after the killing of the BSP MLA Raju Pal in 2005, Umesh Pal, the then Zilla Panchayat member, had told the police that he was a witness to the murder. Umesh Pal allegedly had alleged that when he refused to retract his witness statement, he was kidnapped at gunpoint as well. Now let's go across to Piyush Shori, who's covering this for us and joining us live right now. Piyush, give us a sense of what we're expecting in court. Now also, you know, Atiq Ahmed and his brother, of course, are now almost being brought to justice so many years after, you know, they've been involved in various mafia-style kidnappings and, you know, other cases. Well, you know what, actually it can just be considered as a travesty of law that even after 17 years there has been no conviction of this law, conviction in this case, let alone, you know, mind you, the justice.
And while I'm speaking, I'll just want my video journalist Vijay Yashpal to just focus on the images of the Vajra Vahan or the police vehicle which perhaps is carrying Atiq Ahmed, the main accused involved in the murder of Raju Pal, whose witness was Umesh Pal, who he was later accused of kidnapping. The judgment which may be given today by the court for which he is being produced. But just imagine, the travesty of the law, that it has taken 17 years. It has taken 17 long years for the judgment perhaps to come in this matter. And we just do not know also that what exactly would be the quantum of punishment. And this comes only for the kidnapping of a person who was later murdered. And while I'm just talking about what exactly would be pronounced by the court, right now the images that are being presented to you is the person who was taken from Sabarmati jail and sent back to Naini jail over here in Prayagraj, and now is being produced to MP MLA court, where perhaps today he may face his fate. Let me tell you that there are 3 accused involved in this case who are being presented over here. The first one is Atiq Ahmed, who was taken from Sabarmati jail, where he was first lodged in Gujarat, to Naini jail in Prayagraj. The second person is his brother Ashraf Ahmed, who was taken from Bareilly jail and then sent to Naini jail in Prayagraj. The third person is Farhan, the accomplice of Atiq Ahmed, the main accused, his brother Ashraf Ahmed, and he was the one who was accompanying him. He was presented from Chitrakoot jail to Prayagraj jail. Besides these 3, there are also 7 other accused who perhaps were there on bail. So what exactly would be the fate in this case would all be given by the MP MLA court. But the most important thing over here is that why actually there has been a travesty of law. Why there has been a travesty of justice. Why actually there has been such a delay for a case which has taken 17 years for the court to actually pronounce judgment of. Perhaps with this you can also understand the fear which this person Atiq Ahmed commands in this area. There is a lot of fear which many locals have of Atiq Ahmed and his gang, and this is why many witnesses resulted in turning hostile, and this is why also for a person who has been accused in over 100 cases, in fact not over 100 cases, who has been accused of more than 100 cases, he has not been convicted in any. And you can also understand the influence and fear this person commands, that even after being lodged in a jail in Gujarat, which is over 1,200 kilometers away from Prayagraj, he was reportedly involved in committing a murder of a person who perhaps who he had kidnapped before, the judgment of which is going to come today. That person had been the main witness of him being a murderer, and that case is still facing being trial. So you can understand the fear, you can understand the influence that this person commands over here in this area. And today all eyes would be on the court of what exactly the judgment is going to come. Will the locals who actually fear this person, will that fear actually go away, or will that fear remain? So yes, all eyes on the court, and today is a very important day, not only for Prayagraj but also for India, and it is only going to determine where exactly the course of our justice goes, where course of our democracy goes. Back to the studio. All right, now Piyush, of course, is continuing to bring us the latest on this. Now, just to tell our viewers that Umesh Pal, of course, unfortunately was gunned down outside his Prayagraj residence on the 24th of February. And we are given to understand that Umesh Pal's wife, who will not be present at court today, has said that she would like the maximum punishment to be given to Atiq Ahmed. Now, Atiq Ahmed, Piyush, of course, was a former Samajwadi Party MP from Phulpur, and as you said, there are about 100 criminal cases that have been filed against him, but so far there has been not a single conviction. Why is that? Did he enjoy a kind of political backing, so to say?
you actually raised a very important point, and the unfortunate aspect for our democracy is that a person who is considered to be a rogue element, a person who has got a lot of criminal cases, filed against him, a person who commands that fear. Unfortunately, many political parties also go for him for the support. And perhaps this was the reason this person called Atiq Ahmed was able to get a lot of political support in all quarters. After all, we are going to keep on tracking the minute-to-minute update while Atiq Ahmed is being produced at the MP MLA court. What exactly is the course of justice? Will he be convicted in a case which is over 17 years long? Stay tuned to Republic Media Network as we keep you minute-to-minute update while Atiq Ahmed is being produced in the court of law. See you on the other side of the break. देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पे अशरफ को यहाँ पे ले जाया जा रहा है। आप देखिए लाइव तस्वीरें यहाँ पे रिपब्लिक आपको दिखा रही है। बरेली जेल से अशरफ को प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। Dramatic visuals coming from here at Jantar Mantar as the Congress youth protesters, Karyakartas are being detained by Delhi police officials and para forces over their protest here at Jantar Mantar where they were trying to march, and the visuals could clearly be seen as they were protesting against the disqualification of their leader Rahul Gandhi from the Lok Sabha. And now we'll show you that many youth leaders of the Congress have already been detained by the Delhi police official and are taken to the nearby police station. Saturday onwards only, the Congress is staging the nationwide protest is going on by the youth Congress leaders all over the country over the disqualification of Rahul Gandhi from the lower house of the parliament, with the flags of Rahul Gandhi and Indian National Congress in their hands, who are protesting here at Mandi House. Several protesters now they have taken the three-wheeler to go to Jantar Mantar, was the exact place where the youth Congress protest was called for, but they started their protest from outside Himachal Bhavan only. Divide, divide, divide. The opposition and the lobby did it during CA. They tried to do it again when Afghans were being evacuated. Tonight it is time to ask them why their secularism comes with a limited comfort zone. Congress refused to go to court. They are not sure at all if they even have a case to defend. And so they've been saying, flatly so, that we are not even thinking of going to court. Like we are the Gandhis, we don't apologize. But the moot point is that they are not doing what they should. Now, exactly as I had predicted, the opposition unity has completely broken down. The opposition is itself largely perplexed, and I predicted this issue would make news max to max for a week. I was wrong. I was optimistic. Perhaps it has petered out much earlier. Cornerstone of any democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom of expression. 24 days after Rahul Gandhi sought foreign intervention, the United States now intervenes. Political storm as the United States comes out in support of Rahul Gandhi. The BRS, the BJP and the JDS unite. Parliament logjam continues. Papers are thrown at the Lok Sabha chair again. Ruckus in the Rajya Sabha.
Smriti Irani takes on Rahul Gandhi in an unrelenting attack, calls Rahul Gandhi politically frustrated. Mafia Don Atiq Ahmed is moved from the Sabarmati jail to Prayagraj to be produced in court. Mafia Don Atiq Ahmed is moved from Sabarmati to Prayagraj to be produced in court shortly. Good afternoon and welcome. You are watching Live and Breaking on Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. Now, gangster turned politician Atiq Ahmed and his brother Khalid Azim, also known as Ashraf, will be produced in court in connection with the 2006 kidnapping case of Umesh Pal, who was a witness in the BSP MLA Raju Pal's murder case, who was killed last month in an attack allegedly orchestrated by the two. Now, the brothers were brought to the Naini Central Jail on Monday after a long road journey from two separate prisons. Security has been tightened in the court premises as well as the jail complex where the accused are being lodged. So pictures on your screen are of the police carcade that is taking Atiq Ahmed and his brother to a court room where we are expecting a verdict to come out in the Umesh Pal murder case. Now, this is a case that goes back essentially to 2006, if I'm not mistaken. All right, news coming in right now. There will be no Supreme Court relief for Atiq Ahmed. Do remember that Atiq Ahmed had approached the Supreme Court for relief. Let's go across to Ridham Bhardwaj, our legal editor, who joins us. Ridham, take us through the latest that you are getting from the Supreme Court on this. There was a plea moved by gangster and Samajwadi Party leader Atiq Ahmed. He raised apprehensions of danger to his life on being shifted to a UP jail in connection with, like you rightly said, the Umesh Pal murder case, one of the many filed against him. In the Supreme Court, he said that there was a threat to his life and the Supreme Court should protect him. The Supreme Court very categorically has said it is for the High Court where this matter is being heard to do whatever they want. The advocate who appeared for Atiq then said some protection needs to be given. So the Supreme Court asked, are you in custody at the moment? The advocate said yes. The Supreme Court said it is the state machinery that will take care of you. And hence that's where the matter stays. The Supreme Court has refused to give any relief to Atiq Ahmed on his plea. The Supreme Court has clearly said that we'll withdraw the plea, and the bench has said, all right, the petition is withdrawn. So there is no relief for Atiq Ahmed from the Supreme Court, which has asked him to approach the High Court. All right, so no relief coming in from the Supreme Court. But Rhythm, also give us a broad sense of what we are expecting in the lower court today. Of course, unfortunately, Umesh Pal was gunned down in February, and thereafter, of course, this is the verdict in the old kidnapping case, isn't it? Yes, that's right. So Atiq Ahmed, he entered, remember, we know the world of crime in 1979. He's accused of murder. There are 100 criminal cases lodged against him. The most recent was registered at Dhumaganj police station of Prayagraj in connection with, like you rightly said, the murder of Umesh Pal. He was the main witness of the murder of BSP MLA Raju Pal in 2005. There's a clear link that has to be established with that case, and the courts had earlier been told Atiq was involved in the killing of Raju Pal, who was shot dead in 2005. His aides had abducted him in 2006, forced him to give a statement in court in their favor, very serious charges, and then Umesh Pal was gunned down outside his Prayagraj residence. Umesh Pal was a key witness in the former BSP MLA's murder case. So it reads like a film story, but it's the truth on what was happening in Uttar Pradesh at that time. And after this case had been lodged by his family, the FIR also said that there was a conspiracy to kill Umesh Pal and others. There were two men who were linked to it. Now what's happened is, after the Supreme Court order, in June 2019, he was lodged at Sabarmati Central Jail. But he was shifted following a Supreme Court order after he was accused of orchestrating the kidnapping, the assault, also on real estate businessman Mohit Jaspal while he was in prison in UP. He was
brought in Uttar Pradesh, in Gujarat, after covering over, we all saw 1,300 kilometers by road in around 24 hours from Sabramati jail. And the reason he's been brought here is he's going to be produced in the MP MLA court of Prayagraj. His brother, Khalid Azim, alias Muhammad Ashraf, and others will also be there when the court pronounces its order in the Umesh Pal case. Now, Rhythm, this is a classic case, isn't it, of how political patronage delays justice. Now, look at this man, Rhythm. He has been named in more than 100 criminal cases. There has not been one conviction against him. He shifted from one prison to the other, and he still poses a threat to someone. In fact, it is alleged that he and his brother actually planned the murder of Umesh Pal while sitting in prison. Absolutely. With that charge, we have to see what's going to happen. Nupur, a 20-member team of Prayagraj police on Sunday took the custody of this Dawn-turned politician and former MP from Sabramati Central Jail. And he's going to be produced for a verdict in the 2007 Umesh Pal case. And, Ahmed was heard to say things like, "Mujhe inka program malum hai." So, he's been trying to say that there's something that's going to happen against him, but the Supreme Court clearly said the state police will take care of that. And like you rightly said, Umesh Pal, along with his 2 police guards, was shot dead in Prayagraj on 24th of February. He was an eyewitness. Like I said earlier, the 2005 Raju Pal murder case in which Ahmed is a accused. Now, according to Umesh's wife, in 2006, her husband and his associates were kidnapped. They forced him to give a statement in their favor in the court. So all this keeping in mind, he is someone who's been a 5-time MLA. He is now currently was lodged in Sabramati jail. He then began a political journey. He returned to power, but clearly no matter what the political pressure and the public pressure, it's finally time that Atiq Ahmed gets to see justice in this case where the court is pronouncing a judgment today. Absolutely. Rhythm, stay on with us. Now, pictures on your screens are of the huge police cavalcade that is accompanying the main prison van, which is taking Atiq Ahmed and well as his brother to court. Thank you, Rhythm, for joining us. Let's dip into a report that we are getting from the spot. जो तैयारी की जा रही है अंदर से, वो ये कहा जा रहा है कि भाई जो तैयारी हमारी ओर से उसको देख के लगता है कि बहस लंबी चलेगी और सजा को लेकर नए सिरे से बहस की जाएगी। तो देखना ये होगा कि दोषी करार दिए जाने के बाद से सजा कितने साल की होती है अतीक को। Right, so security, of course, heightened outside the court premises, as you can see. Scores of those policemen guarding that area. Now, crowds, of course, also being pushed back. This is a very high-profile case to remember that Atiq Ahmed is a 5-time MP. He was the Samajwadi Party MP from Phulpur as well. जब मामला लग रहा था, सामान्य लोग भी आ रहे थे वकीलों के साथ साथ। तो देखिए, अब यहाँ पे ये रस्सियां लगा दी गई है। रस्सियों के जरिए जो मूवमेंट है लोगों का इस पूरे के पूरे एरिया में वो कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि चूंकि जो एंट्री होगी अतीक के गाड़ियों की वो उस साइड से होगी, लिहाजा जो भीड़ देख रहे हैं आप, चाहे वो जमीन पर हो चाहे वो छतों पर हो, हर तरफ से आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि फिलहाल रस्सियों से लेयरिंग की जा रही है एक रोड के एक साइड की, जिस साइड से अतीक को नहीं आना है। और कॉमन लोग चहलकदमी कर रहे हैं, बेवजह आ रहे जा रहे, सुनने के लिए जानने के लिए वकील आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए रस्सियां लगा दी गई है और जो दूसरा साइड उसको खोल दिया गया है जिधर से अतीक की गाड़ी को काफिला आना है। जो जानकारी है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ अतीक का जो बज्र वाहन है वही गेट नंबर 1 के अंदर एंट्री करेगा। बाकी जो काफिले की गाड़ियां होंगी वो बाहर ही रुक जाएंगी, यानी कि सारी गाड़ियां अंदर नहीं जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ जो बहुत लिमिटेड गाड़ियां सिर्फ उनकी एंट्री अंदर हो पाएगी। इसके अलावा देखिए जो भीड़ है वो इस कदर यहाँ पर हो चुकी है कि चुनौती बन गई पुलिस के सामने, सेंट्रल फोर्सेस के सामने, कि वो कैसे जज करे कि कौन वकील है, कौन आम लोग है, कौन। All right, let's go across to Shravan also, who's joining us on the broadcast. Now, Shravan, give us a sense of what we're expecting right now. Of course, security has been heightened outside the court premises. Well, that's right. In fact, what's important to point out here
right now, Nupur, is the fact that multiple cases have actually been registered against Atiq Ahmed, but so far there hasn't been any conviction in this case. Important to point out right now is that in the case of Umesh Pal kidnapping, that is from 2007, the case has been undergoing. And right now, Atiq Ahmed has finally been produced before the court. This after the court had made it abundantly clear that the accused in the case will have to be produced before the court. Just to give a background of this entire case, remember, this was a day after Umesh Pal, who was basically a witness in BSP MLA Raju Pal's case. He was shot dead in Uttar Pradesh's Prayagraj. Now, in the FIR that has been registered, it basically makes a mention of Atiq Ahmed, his wife, as well as their two sons, younger brother. They all have been named in the FIR that has been registered by the Uttar Pradesh police. There has been a massive crackdown that we have essentially seen over the last few days in terms of the action that has been taken by the Uttar Pradesh police. In fact, the government of the day had made it abundantly clear that they are no longer going to take any sort of mafia activity in the state. I'm afraid I'll have to interrupt you there, Shravan, but thank you for the moment. जा रहा है क्योंकि अब ये देखिए और ये देखिए गोरखपुर की पुलिस जो है यहां पर पहुंच गई है। और देखिए सृष्टि यहां पर भी हलचल बढ़ गई है। करवाया जा रहा था, ट्रैफिक को क्लियर करवाया जा रहा था और आगे यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है। आम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है रोड पर। देखिए अब ये कोर्ट परिसर का रास्ता बैरिकेडिंग गई थी और ये बैरिकेडिंग देखिए आगे बढ़ती हुई हम आपको यहाँ से जी की गाड़ियों का ये बड़ा मौका प्रयागराज के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी उसको लेकर के आज फैसला सुनाया जाना है अपहरण के मामले में। और ये देखिए काफिला पहुंच गया है गाड़ियों का। इस वैन के अंदर अतीक बैठा हुआ है। अतीक के साथ साथ बाकी जो अपराधी हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो अतीक का भाई अशरफ और एक और साथी फरहान, उसकी यहाँ पर मौजूदगी देखिए दिखाई दे रही है। और जो आगे की गाड़ी है उसको आगे कर दिया गया है। फिलहाल जो ये गाड़ी देख रहे हैं आप, उसको आगे करके पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है ये इसको इस तरीके से मैनेज करना, क्योंकि जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये वैन देखिए जाएगी, ये वैन सीधे गेट के अंदर जाएगी, क्योंकि इसी वैन के अंदर बैठा है अतीक, इसी वैन के अंदर बैठा है अतीक, इसके अलावा अशरफ, साथ ही जो साथी है उसका फरहान। और ये देखिए गाड़ी अंदर जा चुकी है, गाड़ी अंदर जा चुकी है। अतीक पर होगा फैसला जिसमें बच जाएंगे 4, क्योंकि होगी लंबी बहस। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि अतीक की जो गाड़ी है वो अंदर जा चुकी है। जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ जो मेन गाड़ी है अब वही अंदर जाएगी, बाकी गाड़ियां अंदर नहीं जाएंगी, बाकी गाड़ी को आपको बाहर पार्क किया जाएगा, लेकिन जो मेन गाड़ी होगी सिर्फ वही अंदर जाएगी। तो वो गाड़ी अंदर जा चुकी है। बाकी ये जो गाड़ी रखी जाती है, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जब ऐसा काफिला चलता है तो 2-3 गाड़ियां कंफ्यूज करने के लिए भी होती हैं, ताकि अगर किसी को कुछ खुराफात करनी हो या बदमाशी करनी हो तो वो कंफ्यूज रहे गाड़ियों के काफिले को लेकर। तो देखिए यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो अंदर जा चुकी है और जो दूसरी तीसरी गाड़ी है वो देखिए उसको बाहर ही रोक दिया गया है। यानी कि ये वो गाड़ियां हैं, यानी कि जो वो गाड़ियां हैं जो एक्स्ट्रा थी वो बाहर रोक दिया गया, और जो मेन गाड़ी है वो देखिए और ये देखिए अब जो गाड़ी है जो गेट बंद कर दिया गया है। इसी एमपी एमएलए कोर्ट के 2nd फ्लोर पर पूरे मामले की सुनवाई होनी है। इसी एमपी एमएलए कोर्ट के 2nd फ्लोर पे पूरे मामले की सुनवाई होनी है। और देखिए पुलिस यहाँ पर भारी तैनाती है पुलिस की। और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे मीडिया को तितर बितर किया जा रहा है, किसी भी एक्स्ट्रा वकील की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई, रस्से लगा दी गई एक बार फिर से। और ये देखिए यहाँ पर रस्सियां लगा दी गई हैं, अब इसके अंदर एंट्री नहीं होगी। जो भी लोग होंगे, जो भी मीडिया के लोग होंगे, उनकी वो यहाँ से रिपोर्टिंग कर सकेंगे। और उस साइड देखिए आपकी जो आरएएफ की फोर्सेस है, आप उनको देख पा रहे हैं। कोर्ट में हम मौजूद हैं और चौथे सुनाया जाएगा। पुलिस यहाँ सतर्क हो चुकी है। अतीक और उसके फरहान को भी यहाँ पर लाया जा चुका है और आरएएफ की तैनाती आप यहाँ पर देख पा रही है कि किस तरीके से आरएएफ को यहाँ पर तैनात अब बढ़ने ना अराजक जो है वो
बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये बड़ा मौका है और ऐसा मौका इसलिए भी है क्योंकि अब अतीक पहुंच चुका है कोर्ट के मुहाने पर। अब अतीक की पेशी है। ऐसे बहुत कम मौके जिंदगी में अतीक के आए होंगे जब वो कटघरे में खड़ा होगा, लेकिन अब वो मौका भी आ गया है जब आज पहली बार अतीक कटघरे में खड़ा होगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी मुकदमे हुए उन सब में गवाह या तो पलट गए या जिला छोड़कर भाग गए या अतीक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब उमेश पाल ने 16 साल तक न्याय की लड़ाई लड़ी, हर मुकदमे में हर पेशी पर वो हर डेट पर जाते रहे और अब वो घड़ी आ गई जब आज फैसला होना है। यानी कि पहली बार ऐसा होगा जब कोई जज अतीक के खिलाफ फैसला सुनाएगा, तो ऐसा पहला मौका होगा जब किसी मामले में अतीक को दोषी करार दिया गया। और ये देखिए अब एक और गाड़ी आ रही है। कहा जा रहा है कि जो ये गाड़ी है वो अशरफ को लेकर के गाड़ी आ रही है। यानी कि अतीक तो जा चुका है अंदर, अब उसका भाई जो अशरफ है अब वो भी अंदर जाएगा। एक और गाड़ी का जो काफिला है वो देखिए आप, सिक्योरिटी के साथ वो यहाँ पर पहुंच गया है। अशरफ और फरहान, इस पूरे मामले में देखिए 11 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई थी, लेकिन जिसमें से 1 लोगों की मौत हो गई, 6 से 7 लोग थे जिनको दोषी बनाया गया। और ये देखिए और तस्वीरें देखिए पुलिस जिस वाहन को एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रहे हैं, यही वो गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद को पकड़ाया गया था, यूपी 70 AG 4078 जिसका नंबर है, और इस गाड़ी के लिए गेट खोल दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी के लिए गेट खोल दिया गया है और संभवतः इसी गाड़ी के अंदर अतीक अहमद को रखा गया, क्योंकि यही गाड़ी आपको टॉप एंगल से दिखा रहा है रिपब्लिक भारत, यही गाड़ी थी जिसमें अतीक था। और देखिए पुलिस रोक रही है किसी को भी बात करने देने से, और ये गाड़ी इसी में अतीक अहमद है। देखिए ये गाड़ी अंदर गई, अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। MP MLA कोर्ट है जहां ये पहुंच चुकी है अतीक अहमद को लेकर। गाड़ी को सीधे आगे ले जाया जा रहा है, ये दूसरी गाड़ी, इसमें अशरफ हो सकता है, वैन देखिए सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, आगे जा चुकी है वैन और गेट बंद किया जा रहा है। RF यहाँ पर है, लोगों को रोक रही है, गेट बंद किया जा रहा है, उसको मोड़ा जा रहा है वैन को। इसी दोनों गाड़ी में अशरफ और अतीक है, ये जानकारी मिली क्योंकि पुलिस के वाहन इसे एस्कॉर्ट करके ले आए हैं। आज गुनाहों का हिसाब होगा। 17 साल बाद अपहरण मामले में, उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद जो तमाम मामलों में आरोपी जरूर रह चुका है, लेकिन अभियुक्त किसी मामले में नहीं बन पाया। कभी गवाह पलट जाते थे, कभी डरा धमका दिया जाता था गवाह को अपने प्रभुत्व का फायदा उठाकर, लेकिन अब इस मामले में अभियुक्त बनने वाला है अतीक अहमद। और ये फैसले का दिन है 12 बजे के करीब कहा जा रहा था, 12:15 बज रहे हैं और 12:30 बजे कोर्ट बैठेगा। इस मामले में अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया जाएगा और उसके हिसाब से 120 धारा है, 364 है जिसमें उम्र कैद की सजा की बात है। और यही मांग उमेश पाल का परिवार कर रहा है कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा इलाका है, इसको किस तरह से सिक्योरिटी में रखा गया। बता रहे थे कि जिस रास्ते से आएंगे उसी रास्ते से आए। देखिए लोगों की भीड़, देखिए लोगों में कहीं ना कहीं उत्सुकता है ये जानने के लिए कि आज कैसे ऐलान होता है सजा का उस व्यक्ति के लिए जिसने पूर्वांचल प्रयास शुरू करके पूर्वांचल में अपनी दहशत बनाई, डर का माहौल बनाया। आज हिसाब होने वाला है उसके गुनाहों का, क्योंकि उमेश पाल अपहरण मामले में आज पहली बार जो तमाम 100 केसेस में आरोपी जरूर रहा लेकिन अभियुक्त नहीं बन पाया, आज उसके गुनाहों का फैसले का दिन है और अब कोर्ट बैठने वाला है। 12:30 बजे का समय था तय बैठने के लिए और 12:15 के करीब हो चुके हैं। कभी भी अब सुनवाई शुरू होगी और 2 हिस्सों में कहा जा रहा है कि पहले दोषी करार दिया जाएगा, यानी जो धाराएं लगाई गई हैं, लगातार रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है कि जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें किन धाराओं में दोषी करार दिया जाता है, उसके हिसाब से 2 घंटे के गैप के बाद सजा का ऐलान हो सकता है। जो धाराएं लगाई गई हैं एक बार आपको बता दें, धारा 147, 148, 149, 364 है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 10 साल की सजा तक का प्रावधान है, आजीवन कारावास का और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। 341, 342, 504, 506, 120B धारा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान है। कोर्ट क्या फैसला लेता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और क्योंकि काफिला अंदर पहुंच चुका है, अशरफ, अतीक, फरहान जो तमाम 10 आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उन्हें लाया गया है कोर्ट के अंदर। आज पेश होना था अशरफ को और कोर्ट से भी देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता लिया था अतीक अहमद ने राहत के लिए, ये बताने के लिए कि उसे डर लग रहा है, उसे यहाँ नहीं लाना है, उसे सुरक्षा को लेकर खतरा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट से कड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जाइए, आपने पहले सीधे एस अदालत को क्यों रुख किया गया, ये तमाम सवाल पूछे गए हैं। और तस्वीर
तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ अभी भी गहमा गहमी का माहौल है, सुरक्षा भारी है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स आपको नजर आ रही होगी, पीएससी के जवान नजर आ रहे होंगे, पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे। और ये जो व्यवस्था की गई है किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए की गई है, क्योंकि बहुत दुर्दांत अपराधी रहा है अतीक अहमद। प्रयागराज वो इलाका जहां से 17 साल की उम्र में उसने अपने गुनाह का पूरा सफरनामा शुरू किया और उसके बाद और ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अंत अपराधी था, डर नहीं लग रहा है आपको? हमको कोई डर नहीं लग रहा है। मैं उमेश पाल का छोटा भाई हूँ, उनका मित्र हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। दिन दहाड़े मर जाऊंगा मगर डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। राजू पाल की आप जूतों की माला लेकर के आए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये दुर्दांत अपराधी है, इसके तमाम सारे शूटर्स हैं? इसके शूटर और अपराधी से मुझे कोई डर नहीं है। हमारा बड़ा भाई राजू पाल गया, उसके बाद उमेश पाल गया और पाल भी चला जाएगा, तो कोई गम नहीं है साथियों। इसका खौफ किस तरीके से रहा? इसका खौफ इस तरीके से रहा कि सपा सरकार भी इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही। भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो है मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, या जूता पहनकर मिट्टी में मिले। हमें डर नहीं लगता है जब लाया जा रहा तो डर नहीं लगता है? अगर वो मुख से बोल रहा है, उसके देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी। मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी, यह सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटकने नहीं पाएगा। नाम बताइए अपना। उमर पाल, अधिवक्ता, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। थोड़ा सा आगे आइए। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, नाराजगी दिखाई दे रही है। तो बड़ा मौका है उनके लिए, क्योंकि आज पहली बार ऐसा है जब अतीक कटघरे में खड़ा होगा और सजा का ऐलान किया जाएगा अतीक के लिए। माना गया राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। ये अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है, और अशरफ को कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जात कभी डरती नहीं है, लड़ना सीखी है। वरुण पाल क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहनकर अपनी सजा सुनता है तो उनके परिवार की बड़ी खुशी होती है। जूता पहना के क्या हासिल? जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं किसी अधिवक्ता या किसी को हत्या नहीं करेगा वो। इतना बड़ा कांड हुआ है अतीक के चाहे जितने शूटर, कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं। वरुण पाल में उस्ताद राजा राम पाल का नाती हूँ, कभी डरने का सीखा ही नहीं मैंने। लेकिन उमेश पाल की हत्या होने क्या लगता है, सजा हो पाएगी? सजा हो जाएगी, जरूर सजा होगी। इनको जो है आजीवन कारावास होगा, फांसी में आजीवन कारावास होगी। वरुण पाल रुक जा। ये जूते की माला इसलिए लाया हूँ कि अतीक अहमद ऐसा कुख्यात माफिया उसको पहनाने के लिए आया हूँ। मैं वरुण पाल जूते की माला इसलिए लाया हूँ कि अगर अतीक अहमद को मैं जूते की माला पहनाता हूँ तो पाल समाज या पूरा अधिवक्ता समाज को ये खुशी होगी कि अगर अधिवक्ता समाज को मारा है तो उनको बड़ी खुशी होगी कि जूते की माला पहनकर वो जो अपनी फांसी जो सजा सुनने को आया है। जूता किसका है ये? यह जूता उमेश पाल, राजू पाल के परिवार का जूता है। वहाँ लोग चले जाएंगे होने की जानकारी मिल रही है। अब तीनों प्रिजन वैन पहुंच चुकी हैं। अलग अलग प्रिजन वैन में पहली जो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी उसमें अतीक और अशरफ थे, और ये जो वैन है इसमें कहा जा रहा है फरहान है, और हो सकता है फरहान को उतार दिया जाए सीधे, क्योंकि गाड़ी यहाँ रुकती ही नजर आ रही है। हालांकि अब आगे बढ़ा रहे हैं। अंदर का शॉट लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देखिए अंदर भी पुलिस की भारी मौजूदगी है। 12:30 बजे का समय है, 12:22 हो रहे हैं, और देखिए उतार रहे हैं फरहान को, शायद यही उतारा जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला था उमेश पाल अपहरण में, इसमें फरहान की भी अहम भूमिका रही थी। कुल 11 लोग थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है, और 10 लोगों पर आज फैसला आना है, और 10 लोगों पर आज फैसला होना है। ये कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर शायद फरहान को यहीं उतार दिया जाए कहा जा रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। भीड़ भारी आप जो देख रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी आप देख रहे हैं, ये वो एहतियात है जो प्रयागराज पुलिस बरत रही है, क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी है। प्रयागराज से ही इसने कहीं ना कहीं अपना उत्थान देखा था और पतन का वक्त आ गया है। अतीक अब पूरी तरह से अंत हो रहा है, और अतीक से कहीं ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कि कहीं भी अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
लगातार देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम लगातार ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अशरफ है, ये तस्वीरें आप देखिए, ये अशरफ है और इधर देखता हुआ ये आगे बढ़ा है। जूम करिए नरदेश्वर, तस्वीरें अशरफ को ले जाया गया है अंदर। अशरफ अभी गया है अंदर। ये अशरफ की तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक पर हमने आपको दिखाई। अशरफ को ले जाया गया है अंदर। अब अशरफ पहुंच चुका है। देखिए 12:23 हो रहे हैं, 12:30 बजे कोर्ट का फैसला आना है और देखिए अशरफ को ले जाया गया है अंदर। तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने दिखाई है। अभी अशरफ गया है तो क्या अतीक भी अभी अंदर नहीं गया? ये सवाल बना हुआ है, ये सवाल बरकरार है। क्या अभी एक और वैन आ सकती है? ये सवाल बना हुआ है क्योंकि 4 वैन्स देखी गई थी नैनी जेल में। और तब देखिए अब ये गेट बंद करने को कह रहे हैं, अब गेट बंद कर रहे हैं। अशरफ की निगाहें सबसे पहले उधर ही गई जिधर कैमरा था। वो तस्वीरें रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई। और देखिए चहलकदमी अब तेज होती हुई, क्योंकि अब वक्त आ गया है गुनाहों का फैसला होने का। उमेश पाल अपहरण कांड, जिसमें उमेश पाल ने तमाम जद्दोजहद के बाद जी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अशरफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां अब 12:30 बजे का समय और कुछ ही मिनट बचे हैं जब कोर्ट बैठेगी और सजा का ऐलान उमेश पाल अपहरण कांड में होगा। उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया जा चुका है। उमेश पाल ने बहुत जद्दोजहद के बाद 2006 में अपहरण किया गया था और 1 साल की जद्दोजहद के बाद ये मामला दर्ज हो पाया था। सोचिए किस तरह का वो दौर रहा होगा और उस दौर में लड़ना कितना मुश्किल था इन दुर्दांत अपराधियों से। लेकिन अब दौर बदल चुका है, वक्त बदल चुका है और फैसले का वक्त आ चुका है। लगातार हम तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। अशरफ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कोर्ट के अंदर की तस्वीरें देखिए, किस तरह की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। आरएएफ आपको नजर आ रही है, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, पीएससी के जवान नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुस्तैदी बढ़ती भी नजर आ रही है। वकीलों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया है, जिनके मामले हैं सिर्फ संबंधित मामलों के वकीलों को ही अंदर जाने दिया गया है। अशरफ अंदर जब गया तो उसकी निगाहें कैमरे पर थी। बिल्कुल सलोनी, देखिए जिस तरीके से आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, हम लगातार काफिले को फॉलो करते हुए आए और आपको बता दें कि अशरफ गया है, लेकिन अतीक और फरहान अंदर गया है। अतीक और अशरफ को पहले ही ले जाया जा चुका है। जिस काफिले को लगातार हम फॉलो कर रहे थे उसी में अतीक और अशरफ मौजूद था। जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब आपको बता दें कि आज जिस तरीके से अभी भी इस बात को लेकर पेच फंसा हुआ है कि आज यहाँ पर सीधे दोषी करार दिया जाएगा और उसके बाद में किस तरीके से सजा का ऐलान होगा। क्या ये 2 भागों में होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन ये सीधे जो रास्ता जाता है, भीतर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो आम पब्लिक है वो भी यहाँ पर जुटी हुई रही और इस पूरे चौराहे को अभी भी चाक चौबंद तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी अराजक तत्व घुसने ना पाए कोर्ट परिसर के भीतर, क्योंकि अंदर कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। जिन लोगों का घर है वो लोग अपने छत पर मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर बहुत ज्यादा है और किस तरीके से ट्रैफिक को यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अतीक एक बड़ा दुर्दांत अपराधी, एक माफिया, जिसे कोर्ट के भीतर ले जाया जा चुका है और सबसे बड़ी बात कि अभी तक के इतिहास में 100 केसेस अतीक पर दर्ज हैं और ये पहला इकलौता मामला है जो आज अतीक को इस MP MLA कोर्ट में सीधे सजा की मुहाने पर लेकर आया है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि 100 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी सारे मामले जो अतीक के रहे वो ट्रायल पर रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर गवाही दे सके, वो आकर कोई बयान यहाँ पर दे सके। अनामिका हमारी सहयोगी लगातार कोर्ट से बनी हुई है। अनामिका, क्या तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? अंदर भारी भीड़ है, आम लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं इस दुर्दांत अपराधी का आज जिस तरीके का हाल हो रहा है उसे देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, देखिए अब डॉन मौजूद है कोर्ट के अंदर और डॉन के साथ साथ उसका भाई अशरफ और साथी फरहान, तीनों की मौजूदगी कोर्ट के अंदर है। लेकिन जो दर्शक अभी भी जुड़े रिपब्लिक भारत में बता दें उनको पूरा का पूरा मामला क्या है जिसमें आज अतीक के ऊपर फैसला आना। तो दरअसल 5 जुलाई 2007 में उमेश पाल ने 11 लोगों के खिलाफ FIR करवाई थी जिसमें ये कहा गया था कि 11 लोगों ने उनका अपहरण किया, जिसमें कहा यह गया था कि इसमें नामजद किया गया। तो उस वक्त अतीक अहमद सांसद था। इसके साथ साथ ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में सांसद अतीक अहमद, उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, दिनेश पासी, शौकत खान, हनीफ, अंसार बाबा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया। अंसार बाबा मर चुका है इस पूरे मामले में, तो अब उसकी यहाँ पे मौजूदगी जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि भाई जो बाकी वादी है जो बेल पर बाहर है वो पहले इलाके अंदर रखे गए हैं, यानी कि चूंकि आज फैसला आना है इस पूरे मामले में
में जितने भी आरोपी बनाए गए थे उन सब की अंदर पेशी हो रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी कि देखिए, उमेश पाल की ओर से जब धुमनगंज इलाके में एफआईआर करवाई गई थी तो ये कहा गया था कि जो धाराएं थी 2007 में वो ज्यादा लगाई गई, जानबूझ करके उमेश पाल ने ये कहा था कि भाई इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, अपहरण के वक्त मैं मरते मरते बचाऊं, मैं बख्शूंगा किसी को नहीं। तो उस वक्त चूंकि 2007 में सरकार बदल चुकी थी, मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी, लिहाजा यहाँ पे साथ मिला सरकार का, तो उमेश पाल ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। धारा जो लगाई गई 147, 148, 149, 364, 323, 341, 342, 504, 506, 34, 120। साथ ही साथ ये भी कहा गया था इसमें कि जो अपहरण है वो हत्या के इरादे से किया गया था, लिहाजा इसमें हत्या का मामला भी बनता है, ये भी कहा गया। और इसी को लेकर आशंका जताई जा रही कि भाई आज जो सजा होगी वो किस लेवल की होगी। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह भी हुई कि जब इस पूरे मामले में एफआईआर हुई तो एफआईआर के बाद जांच की गई। इस पूरे मामले में आईओ ने जांच की और जांच के बाद जो रिपोर्ट दी अपनी, उसमें यह पाया गया कि जावेद उर्फ बज्जू फरहान, आबिद इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर का नाम खुल करके सामने आया। इस पूरे मामले में अगर बात की जाए उमेश पाल की ओर से, तो उमेश पाल की ओर से 8 गवाहियां हुई। उमेश पाल की ओर से उमेश पाल ने गवाही दी, उनके एक साथी ने गवाही दी जो उनके रिलेटिव भी थे, 2 जांच अधिकारियों ने गवाही दी और 6 अन्य पुलिस वालों ने भी गवाही दी उमेश पाल के साइड से। जबकि उस वक्त अतीक की तूती बोलती थी और अतीक की ओर से कुल 54 लोगों ने बयान दर्ज। तस्वीरें कोर्ट के ऊपर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोर्ट के ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनामिका आपके पास वापस लौटेंगे, कोर्ट के ऊपर की तस्वीरें देखिए जहां सुरक्षा कर्मी बायनोकुलर से बाकायदा पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दुर्दांत अपराधी है, इसने बहुत सी घटनाओं को अंजाम दिया है। जेल में रहते हुए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप है। ऐसे में व्यवस्था कैसे पुख्ता रखी गई है, ये MP MLA कोर्ट है और ऊपर जो आपको वहां पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं वो बायनोकुलर से दूर दूर तक दूरबीन से देख रहे हैं कि आसपास इलाके में कहीं कोई हलचल तो नहीं है। अंदर देखिए ब्रीफिंग भी चल रही है, अंदर ब्रीफिंग भी चल रही है। कोर्ट के अंदर की भी तस्वीरें हम ऊपर से आपको दिखा रहे हैं। अंदर ब्रीफिंग चल रही है कि कैसे सुनवाई के दौरान सजग रहना है, चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये वक्त बहुत ज्यादा गंभीरता से पुलिस ले रही है। प्रयागराज पुलिस समझ रही है कि ये दुर्दांत अपराधी दो दुर्दांत अपराधी पहुंचे हुए हैं। अशरफ का भी अच्छा खासा क्राइम रिकॉर्ड है, 50 से ज्यादा केस है और अतीक का भी 100 से ज्यादा केसों का क्राइम रिकॉर्ड है। हालांकि ट्रायल हर मामले में चलता रहा, गवाह पलटते रहे और अतीक बचता रहा, लेकिन अब बचने का समय खत्म हो चुका है। आरोपी से अभियुक्त अब बनने वाला है अतीक अहमद, अशरफ अहमद। और तस्वीरें हम जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, नीचे की भी दिखा रहे हैं, मीडिया की मौजूदगी है, वकीलों की मौजूदगी है और आरएएफ देखिए कैसे श्रृंखला बनाकर खड़ी है, रस्सी लेकर आरएएफ श्रृंखला बनाकर खड़ी है। और गेट की भी तस्वीरें दिखाएगा नरोदेश्वर, गेट पे भी देखिए लेयर्स में महिला कांस्टेबल्स आपको नजर आएंगी, पुलिस नजर आएगी, PSC नजर आएगी, आरएएफ नजर आएगी। और देखिए अब ऐसा लग रहा है कि सुनवाई शायद शुरू हो रही है, क्योंकि देखिए जो पुलिसकर्मी है, अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी वहां जो सीढ़ियां हैं, जिस वैन से लाया गया था अशरफ को, वो वैन अभी भी वहीं खड़ी है, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और अंदर देखिए वकीलों की एक तरफ मौजूदगी है, एक साथ अच्छी खासी संख्या में वकील, कम से कम 20 से 25 वकील वहां मौजूद हैं। और पुलिस ने पूरा स्टेयरकेस है, जो सीढ़ियों का रास्ता है, उस पर मुस्तैदी बढ़ा दी, उस पर तैनाती बढ़ा दी, यानी कि अब सुनवाई शुरू हो सकती है। ये समझे क्योंकि मीडिया की एंट्री नहीं है, कहा गया कि सरकारी वकील जब बाहर आएगा तो वो पूरे मामले की जानकारी देगा कि किन धाराओं में दोषी करार दिया गया है और कितने साल की सजा। और हालांकि ये भी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि टुकड़ों में ये फैसला आ सकता है, पहले दोषी करार दिया जाएगा और उसके 1-2 घंटे बाद सजा का ऐलान संभव है। तो उस लिहाज से ये जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं वो रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है करीब से, अलग अलग एंगल से। मेरी सहयोगी सृष्टि, अनामिका दोनों ही MP MLA कोर्ट पर मौजूद है, वो नीचे से भी आपको तस्वीरें दिखा रही है, टॉप एंगल से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। और कभी भी ये कहा जा रहा है कि अब कोर्ट असेंबल हो सकता है, कोर्ट असेंबल हो सकता है, क्योंकि 12:30 बजे का समय तय किया गया था और 12:41 हो चुके हैं। ऐसे में कभी भी अब कोर्ट असेंबल हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें जो अपराध है अगर सिद्ध होता है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आजीवन कारावास का है, 120 भी या 364A का जिक्र यहाँ जरूरी है। डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल जो जज हैं उनके कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। और देखिए जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी अदालत में पेश किया गया है। सबसे पहले धाराओं के आधार पर दोष सिद्ध किया जाएगा, उसको लेकर कोर्ट का फैसला आएगा। दोष किन धाराओं में सिद्ध होता है उसके आधार पर ही सजा तय की जाएगी कि कितने साल की सजा होती है। ये उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 बजे के बीच ये तय हो सकता है और कोर्ट का फैसला आ सकता है। लेकिन अभी भी गहमा गहमी है, बिल्कुल सलोनी, देखिए जिस तरीके से आप लगातार बता रही हैं, टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर
पुलिस बल की तैनाती मुस्तैद है, मीडिया को भीतर जाने की इजाजत नहीं है और सरकारी वकील की ओर से बताया जाएगा। लेकिन अभी संशय की स्थिति इस बात को लेकर है कि भले ही ये दुर्दांत अपराधी आज सजा के मुहाने पर हैं, लेकिन क्या दोषी करार देने के कुछ घंटे बाद ही सजा का ऐलान किया जाएगा या दूसरी तारीख दी जाएगी? क्योंकि ऐसे मामलों में देखा गया है कि दोषी करार देने के बाद में थोड़ा सा समय लेकर दूसरी तारीख भी दी जाती है। इस तरीके के प्रावधान भी हैं। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि मामला बहुत अलग है, मामला बहुत संवेदनशील है, तो कोर्ट आज असेंबल हुई है, बेंच अभी बैठेगी और किस तरीके का फैसला यहाँ पर लिया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जब ये काफिला नैनी जेल से निकला और जिस तरीके से प्रयागराज के रास्ते नैनी ब्रिज होते हुए ये एमपी एमएलए कोर्ट जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, एक बार जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप बाहर की तस्वीर देख रहे हैं कि कोर्ट परिसर से 100 मीटर की दूर के बाहर की तस्वीर कि किस तरीके से इस चौराहे पर भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, कैसे यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और अंदर मीडिया का जमावड़ा है, अंदर आम लोग जो है वो भी लगातार जुटे हुए हैं। लोग यहाँ पर देखने आए हैं, लोग यहाँ पर हैरत में हैं कि किस तरीके से ये जो अपराधी हैं उन्हें यहाँ पर उनके अंजाम तक। देखिए कुछ लोग जो चौराहे पर मौजूद हैं, हम एक बार बात करने की उनसे कोशिश करेंगे, एक बार जानने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने वो वर्चस्व यहाँ पर देखा है और किस तरीके से अतीक अहमद का आज खात्मा हो रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार हम कोशिश करेंगे बात करने की कि किस तरीके से अतीक अहमद को यहाँ पर लाया गया है। कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? ये वो बड़ा अपराधी है जिसने इतने अपराध किए, कुछ कहना चाहेंगे? जी, इनको सजा मिलनी चाहिए, जो भी है। मतलब उम्मीद करते हैं सजा होगी, जैसा भी होगा, जो कोर्ट का न्यायालय का जो भी आएगा। आपको क्या लगता है ऐसे अपराधी, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, इन्होंने बड़े अपराध किए हैं, क्या लगता है कि ठीक हो रहा है जो हो रहा है सरकार में? जी, जो भी होगा देखा जाएगा। जो बिल्कुल, तो देखिए और भी तमाम कुछ लोग हैं, कुछ लोग बात करने के इच्छुक हैं, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन ये जो जनता है, ये इस वक्त जनता है प्रयागराज की जो लगातार यहाँ पर मौजूद है, देखने के लिए भी पहुंची हुई है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर की कि यहाँ पर भी सजगता जो लोगों की है वो मुस्तैद है। अतीक अहमद अंदर मौजूद है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सजा होगी? सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। प्रयागराज के रहने वाले, जी हाँ, कटरे। इसका आतंक तो आपने करीब से देखा होगा कि कैसे आतंकित था, बहुत करीब से देखे इसका आतंक हम लोग। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? दोनों भाई मौजूद है अंदर? हाँ, अंदर दोनों इंसाफ होना चाहिए ना? इंसाफ होना चाहिए, कम से कम आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, ये उम्मीद आप कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। और दूसरी जो विपक्षी सरकार है वो कह रही है कि गलत हो रहा है। विपक्षी क्या है, जो सरकार ये होगी ये ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो सरकार है वो ठीक कर रही है, ये लगातार कहा जा रहा है। सलोनी हमारे साथ मौजूद है। सलोनी, आप वहाँ की तस्वीर दिखा रही हैं, हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयागराज की जनता की राय क्या है आखिरकार अतीक की इस पेशी को लेकर। फिलहाल वहाँ से क्या अपडेट है? बिल्कुल सृष्टि, लगातार आप नीचे से तस्वीरें दिखा रही है, लोगों की राय भी ले रही है क्योंकि ये वही प्रयागराज है जहां 17 साल की उम्र में गुनाह का अपना पूरा कारनामा लिखना शुरू किया था अतीक अहमद ने और इसी प्रयागराज में गुनाहों का हिसाब हो रहा है। ये पहला केस है जिसमें आरोपी से अभियुक्त बन रहा है। ये लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं अतीक अहमद पर, लेकिन सब में ट्रायल चलता रहा, फैसले की नौबत नहीं आई। ये पहला केस है जो सजा के मुहाने पर ले आया है अतीक अहमद को और सजा का ऐलान होगा। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं टॉप एंगल से भी, लोगों की जहां भीड़ है, देखिए वकीलों की भीड़ है और इसके अलावा जो अंदर की तस्वीरें हैं, अंदर की भी तस्वीरें हम कोर्ट की आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर मुस्तैदी बहुत देखी जा रही है पुलिस की। ये पूरा मामला इतना गंभीर था, उमेश पाल जिसका अपहरण किया उसकी 1 महीने पहले हत्या कर दी है, तो सोचिए ये दुर्दांत अपराधी जेल के अंदर रहकर भी तमाम षड्यंत्र रचता रहा है। इस पर और अशरफ पर यह आरोप है कि उमेश पाल की हत्या इन्होंने जेल से ही इन्होंने प्लान की है। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी नीचे एमपी एमएलए कोर्ट से आपको गेट नंबर 1 से तस्वीरें दिखा रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, वकीलों में नाराजगी देखी जा रही है, क्या कह रहे हैं वकील? ऑलरेडी वो उसमें सुनवाई हो नहीं पाएगी, लिहाजा आज उनको लग रहा है कि भाई जो उनका कोर्ट परिसर है एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो नॉर्मल से सुनवाइयां होती हैं मुकदमों की वो हो नहीं पा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसका मैं जिक्र करना जरूर चाहूंगी यहाँ पर, उमेश पाल ने 16 साल तक इस लड़ाई को लड़ा है। इस बीच में एक बार ऐसा भी मौका आया जब उमेश पाल को यह लगा कि इस मामले में सुनवाई आगे ही नहीं बढ़ रही है, तारीखें ही नहीं लग रही है। उसके बाद उमेश पाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका की थी। उस हाईकोर्ट की याचिका में यह कहा गया था कि भाई ये मामला बहुत सेंसिटिव है, उनकी जान को खतरा है, लिहाजा इस मामले की जल्दी
जल्दी सुनवाई की जाए। तो उसके बाद से कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा, समझा और ये माना कि भाई ये बहुत संवेदनशील मामला है। जिसका अपहरण हुआ है वो खुद आके कह रहा है कि भाई मुझे खतरा है। तो इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले की ट्रायल करके 2 महीने में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इसके बाद से ये मौका उनके पास आया। मेरे साथ बहुत लोग जुड़ गए यहाँ पे बात करने के लिए, जिसमें से वकील भी, आम जनता भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, जिन्होंने अतीक के अत्याचार को देखा भी है। आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगी, शुरुआत में आपसे करूंगी। आज ऐसी घड़ी आई अतीक के लिए जो फैसले की घड़ी है, जिंदगी बदल जाएगी उसकी मुझे लग रहा है आज। अब ये न्यायालय के सामने सब जुडिस मैटर है, जजमेंट आने के बाद ही कोई चीज की जो धाराएं लगाई गई हैं वो तो लगता है देख करके कि जो अब तक बयान हुए, गवाहियां हुई हैं, बचने की कोई गुंजाइश नहीं आती क्या? जब तक किसी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जब तक उनको कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक उस सेक्शन में कन्विक्शन करना आसान नहीं है। ठीक है, आप लोग बताइए, जिस तरीके से ये अतीक अहमद के अत्याचार से तमाम लोगों ने यहाँ पे जूझा भी है, बहुत शिकायतें भी की, FIR भी की, कोई सुनवाई नहीं हुई, आज मौका है, क्या कहेंगे आप लोग? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज अतीक अहमद को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर फांसी का संदेश जाता है, फांसी अदालत देती है तो बहुत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा। All right, Republic Network on the ground. You're getting you all the latest from Ground Zero, live from Prayagraj. Atiq Ahmed and his brother in court, and we are tracking all the details, all the development from Prayagraj court. Remember, these are live visuals from Prayagraj court. Earlier, Atiq Ahmed sought Supreme Court's protection, but the Supreme Court asked him to go to the High Court and said that the state machinery will take care of the security, granting no relief. And my colleague Piyush is live with us on the broadcast. Piyush, anytime now, from now, we can hear the court pronouncing the order. What is the latest you're picking up? All the 3 main accused in this case, namely Atiq Ahmed, Ashraf Ahmed and his accomplice Farhan, has been produced in the court, and we expect that something dramatic, something very big may be pronounced by the court, because for 40 years Atiq Ahmed has not been made a convict. Big news coming in. Mafia Don Atiq Ahmed has been convicted. That is the latest we are learning. This is the big breaking news of this hour. Atiq Ahmed, Mafia Don Atiq Ahmed, has been convicted in Umesh Pal kidnapping case. Atiq Ahmed has been pronounced guilty, has been found guilty. Both Atiq and his brother Ashraf have been found guilty by the MP MLA court. In fact, all 10 accused in this case are found guilty and have been convicted. That is the big breaking news that is we are getting in. Both Atiq and brother have been found guilty. Remember, many of the cases, hundreds of cases have been filed against this man, Atiq Ahmed. Piyush, what is the latest you're learning? It's a big development here. Atiq has been found guilty and convicted. Guilty ho gaya. Are receiving this news perhaps from the courtroom that Atiq Ahmed may have been proved guilty, but there is no official confirmation to it. But we are going to be waiting for an official confirmation to it. Only then we are going to be breaking this. But yes, there are confirmation that yes, Atiq Ahmed and his accomplices have been made guilty in this 2006 murder case. So we are So we are going to be just speaking to some people over here and trying to confirm this also from the people over here, that are they proved guilty of this. As what we have been told from the courtroom is that they have been made guilty, but yes, we are waiting for the official confirmation and we are going to be breaking this very soon. So this is a very big detail which is coming from the courtroom over there, that Atiq Ahmed, his brother Ashraf Ahmed and Farhan, his accomplice, may have been made guilty in the 2006 abduction case of Umesh Pal. And this is equally significant because for 40 years... Ahmed and his brother have been convicted in this 2006 case. What more can you tell us?
We'll try connect with Rhythm yet again. But let us tell you, ladies and gentlemen, this is the big breaking news that we are getting at this point in time. This is about Umesh Pal kidnapping case, 2006 case, remember, and Atiq has been found guilty in this case, Umesh Pal kidnapping case, and the quantum of sentence, of course, will be the next thing that everybody has their eyes on. But latest that we're learning is that gangster turned politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf have been convicted there. Republic TV, of course, getting you minute by minute updates live from Prayagraj, from Ground Zero, and also we will be getting you the legal perspective on this. But the big breaking news, but the case that Republic TV has been tracking all along is that now in this 2006 Umesh Pal abduction case, Atiq Ahmed, the gangster turned politician Atiq Ahmed and his brother has been pronounced guilty by the court. They are guilty of kidnapping Umesh Pal. The quantum of sentence is the thing that we will be having our eyes on, and we will be updating you on that. But he has now been convicted. Remember, the relatives, the wife of slain Umesh Pal had demanded the gallows for Atiq Ahmed. I'm learning that our legal editor, Rhythm, is back with us on the phone line. Rhythm, this is a big development. Atiq and brother Ashraf have been found guilty in this 2006 case. Absolutely. So, gangster turned politician Atiq Ahmed, Ashraf, 8 other accused have been convicted by the MP MLA court of Prayagraj in Umesh Pal abduction case of 2007. They have been convicted for kidnapping. As we're going to see what happens ahead, let's also tell our viewers what the Umesh Pal case was all about. Like I was discussing earlier also, this is a case of 2007 of kidnapping and killing of Umesh Pal. His wife had alleged that there was a conspiracy that had been done along with Atiq Ahmed, who was a very big part of this conspiracy. Yesterday, as the UP police took Atiq Ahmed to Prayagraj from Sabarmati jail, he also tried to mention in the Supreme Court he needed protection, but the Supreme Court said it is for the state police to be protecting you. What is extremely clear is that finally today, even as his family has been saying things about Umesh, about his security, it is in the kidnapping case. Even as we saw high security at the MP MLA court in Uttar Pradesh, he has been convicted in the kidnapping case in which he was an accused. Now, even as tight security arrangements have been made, police vans were seen carrying Atiq. He arrived at the Prayagraj court. What is really to be seen is the sentence that will be coming in. But this is something that's happening a bit late. He's a politician, gangster turned politician. They were to be present before the court today, where they are. And today now the public prosecutor has also come out and said that law is supreme. Every person is equal in the eyes of the law, and the sentence will depend upon the court. Hearing for the 10 accused in the ongoing court happened today, and the public prosecutor has now said that we shall see what the sentencing will be. We also heard Daya Shankar Mishra, lawyer of Atiq Ahmed, who said that we have the right to appeal in a higher court. So the next strategy available for Atiq Ahmed is to appeal in a higher court. Let me also try and go across to guests who are joining us on the phone line as we are speaking. If we can get a sense of what happened in the court and how are you looking at the judgment? All right, we will try and reconnect with our guest, but Abhishek Kapoor, our senior executive editor, is joining us on the phone line. Abhishek, this is a big development. Republic TV has been tracking this case all along, and this is the first ever conviction for Mafia Don Atiq, who has a decades-long criminal history. Absolutely. So, you see, Atiq Ahmed is accused in over 200 cases. When this Umesh Pal kidnapping case was registered, he already had 101 cases against him, and that was way back in 2007. And it's a history of about 35 years of his involvement in criminal activities from
murder to extortion to property theft and whatnot. Right, we'll try and reconnect with Abhishek there. We seem to have lost that line now, but Atiq Ahmed and brother Ashraf have been pronounced guilty. Remember, the quantum of sentence, of course, will be the one to watch out for. But remember that this is development. 17 years. It has taken 17 years for Atiq Ahmed to be convicted, and we are getting all the details from the court and from ground zero. His brother Ashraf too has been pronounced guilty. All 10 accused in the kidnapping case of Umesh Pal have been convicted by an MP MLA court in Prayagraj, and this is the very first conviction of Atiq Ahmed. Don Atiq Ahmed and his brother have been pronounced guilty, and lots of high drama that we are learning from the court as well at Prayagraj. But we are learning that the latest, that is Mafia Don Atiq, has been pronounced guilty. His brother Khalid Azim alias Ashraf also were produced today in the court in connection with the 2006 kidnapping of Umesh Pal, and now this is the latest we're getting in, that Atiq and brother Ashraf have been found guilty. This is a case of 2007, remember, and Atiq Ahmed has more than 100 cases against him. But but he has been convicted for the very first time. अब दोषी तो करार दे दिया गया है. अब कितना समय बचा है अतीक के पास अपने आप को बचाने का, बहस करवाने का, या जो दलीलें देने का? दोषी करार दिए जाने पर सजा का ऐलान होगा. उसके बाद इनके अतीक या अपराधी जो हैं मुलजिम, उनके अधिवक्ताओं को समय दिया जाएगा कि उस पर सजा के बिंदु पर बहस करें. फिर उस पर बहस होगी. फिर सरकारी वकील या उमेश पाल के जो और प्राइवेट वकील हैं वो अपने अपने पक्ष रखेंगे कि इनको फांसी दी जाए या उनको आजीवन किया जाए. जो भी हो, दोनों पक्षों की दलील होगी. उसके पर बहस तो खैर लगभग शुरू हो चुकी है. ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ देर में सजा पे बहस नहीं शुरू हुई. नहीं, सजा अभी हुई नहीं. अभी मतलब दोषी करार दिए जाने के बाद जो बाकी जो प्रोसेस है उसको हाँ, उस पर प्रोसेस चल रहा है. तो अब जज साहब पूरी फैसला लिखाएंगे कि उनको कस्टडी में लिया जाए, सब लॉकअप में, यानी कि कस्टडी में चले गए, कस्टडी में चले, हाँ कस्टडी में चले जाएंगे. उसके बाद फिर जो है जज साहब अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाएंगे. मतलब अलग अलग धाराओं में, तो फिर तो एक दर्जन धाराएं हैं ना यहाँ पर. आप बताइए सर, जिस तरीके से अंदर चल रहा है, ये बड़ा मौका आप लोगों के पास भी, चूंकि आप लोग वकील है, इसी पेशे में आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन अतीक थोड़ा अलग है उन बाकी सबसे, क्योंकि पहला मौका है उसके लिए जहाँ पे दोषी करार दिया गया. जी नहीं, देखिए अभी वर्डिक्ट आना बाकी है, तो मेरे ख्याल से हमको न्यायालय के वर्डिक्ट का वेट करना चाहिए. उसके बाद तब कोई ओपिनियन देनी चाहिए. बट सर दोषी करार तो दे दिया गया है ना भाई, पहली जीत तो यहाँ पर हो गई. लेट द फाइनल वर्डिक्ट कम. अभी कयास लगाने से कोई नहीं है. न्यायालय को अपना वर्डिक्ट देने दीजिए. उसके बाद फिर जो होगा वो व्यवस्था के अनुसार बहस होगी. सजा पे जो बहस होगी भाई वो तो 3 साल से उम्र कैद तक होगी. तो बीच में भी तो बहुत आप लोग पत्रकार, हम लोग रोज यहाँ कर रहे हैं. फिर मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों को, वकीलों को, प्रयागराज की जनता को, अन्य लोगों को इस फैसले को, सामान्य दिनों के जो फैसले हो रहे हैं, इन धाराओं में रोज फैसले हो रहे हैं, उस तरह लेना चाहिए. बिल्कुल अनामिका, देखिए आप लगातार वकीलों से बात कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें इंतजार करना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या वर्डिक्ट यहाँ पर दिया जाता है. अलग अलग धाराएं हैं, 1 दर्जन से ज्यादा धाराएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा पर जो फोकस किया गया वो 364A पर किया गया कि किस तरीके से इस धारा के तहत में किसी भी जो आरोपी है, केस चल रहा है, उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि किसी भी मामले में जो गवाह होता है, जो मुख्य गवाह, उसे किडनैप करना, उसे बंधक बनाकर रखना, उसे प्रताड़ित करना, उसे किसी प्रकार से चोट पहुंचाना, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है जो अतीक के ऊपर आरोप है. और 364A पर ही लगातार ये फोकस यहाँ पर किया जा रहा है. लेकिन अभी जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि इंतजार करना होगा कि आगे कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है. सजा का ऐलान आज किया जाता है अलग अलग धाराओं में. जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता दें. और तमाम लोग देखिए यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो आम लोग हैं प्रयागराज के. एक बार इनसे भी हम कोशिश करते हैं बात करने की. दोषी करार दे दिया गया है अतीक अहमद को, कुछ बोलेंगे आप लोग, बताएंगे? अतीक दोषी करार दे दिया गया, ठीक हुआ है. क्या लग रहा है आपको? ठीक है. आप लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं. अतीक अहमद को तो जानते होंगे? जी 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 जानते हैं. क्या क्या जानते हैं अभी तक इनके बारे में? अब इनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं, अब क्या बताएं. अपराधी तो बहुत अपराधी तो है ही. तो आज कैसा लग रहा है कि अपराधी को सजा हो रही है? नहीं, हम लोग तो खुश हैं. हम लोग तो खुश हैं. इससे पहले की सरकारों में तो ऐसा देखा नहीं.
बिल्कुल, देखिए ये बचाती थी और क्या, पहले सरकारें बचाती थी। हाँ, अब ये सरकार से बच नहीं पा रहे हैं। हाँ। इसीलिए जो है। तो अब एक प्रयागराज के निवासी होने के नाते अगर आप लोग से हम जानना चाहें, कैसा लग रहा है कि प्रयागराज में ही पला बढ़ा, आगे बढ़ा, पहला अपराध यही किया और आज जेल में सजा हो रही है? जी, सजा होगी। तो देखिए ये कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने। भाई साहब, कुछ बोलना चाहेंगे? अतीक अहमद को सजा का ऐलान हो सकता है, दोषी करार दे दिया गया। हाँ, उसमें तो आ गया चैनल में कि उसको दोषी करार दे चुका है। अब कैसा लग रहा है? प्रयागराज के रहने वाले? हाँ, प्रयागराज के रहने वाले। जानते होंगे आप कि कैसे इन्होंने आतंक फैलाया था प्रयागराज? अरे पूरा प्रयागराज इनसे डरता है। अभी भी डरता है? और क्या। तो अभी तो सरकार सजा दे रही है, अब कैसे डरता है? आपका सजा जब होगी तब देखा जाएगा ना। बिल्कुल सृष्टि, लगातार आप लोगों से भी बात करिए। वो लोग हैं जिन्होंने 80 के दशक में देखा है अतीक अहमद को किस तरह से किसी भी जमीन पर वो हाथ रख देता था और उस पर दावा करता था कि वो जमीन उसकी है। इस तरह का माहौल बनाया था और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में यही स्थिति कर दी गई थी। अब दोषी करार दिए जाने के बाद कहीं न कहीं इंतजार है कि सजा कितनी होती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा धाराएं, दर्जन भर से धाराएं ज्यादा हैं, आप लगातार बता रही है, अनामिका लगातार बता रही है, लेकिन दो धाराएं जो बहुत जरूरी है, 120B का जिक्र हम कर रहे हैं, 364 का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आजीवन कारावास की बात कही गई है। और यही उमेश पाल का परिवार मांग रख रहा है। जब रिपब्लिक भारत ने बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, तभी इंसाफ होगा। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको लगातार। देखिए कैसे यहाँ पर कोर्ट परिसर के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है, भारी भीड़ है और कौतूहल भी है लोगों में कि क्या सजा होती है। 17 साल पुराना ये मामला जिसमें MP MLA कोर्ट ने अतीक अहमद को अब दोषी करार दिया है। और देखिए इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से जैसे अतीक को बंद वैन में लाया गया, उसको लेकर भारी मुस्तैदी देखी गई। 10 किलोमीटर का ये सफर था जिसे 28 मिनट में तय किया गया। वैन में बाकायदा CCTV कैमरे लगाए गए थे। तो तमाम जो चीजें हैं वो रखी जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं मुस्तैदी। फैसले से पहले अतीक को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगा, ये भी हमने बताया दर्शकों को, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में अतीक ने सुरक्षा देने की अपील की थी। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अतीक ने कहा था कि जब तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है उसे सुरक्षा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप अपनी शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाइए। इस अपील को खारिज कर दिया गया। कोर्ट के बाहर कुछ लोग, यहाँ तक कि जो प्रयागराज के लोग थे, वो जूतों की माला लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि प्रयागराज में अतीक ने बहुत आतंक फैलाया है, लोगों को बहुत तंग किया है, हम उसे जूतों की माला पहनाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज के लोगों की क्या मंशा रही है। अतीक की वैन में पर्दे लगे हुए थे। अशरफ की तस्वीर हमने दिखाई, फरहान को भी उसी नैनी जेल से लाया गया। 100 से करीब मुकदमे चल रहे हैं और ये अपहरण के मामले में, उमेश पाल अपहरण केस के मामले में इस बार आए हैं, जिसमें ऑर्डर के लिए मुकदमा रिजर्व। हमें लगता है कि अपहरण केस में उन्हें कॉन्विक्ट कर दिया गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ये है कि कोर्ट क्योंकि ऑर्डर रिजर्व कर लेती है तो कितनी सजा उनको मिलती है। इसमें कितने का प्रावधान है, कितने का मतलब सजा मिल सकती है का प्रावधान है? इसमें देखिए ऐसा है, उम्र कैद तक की सजा होती है। अब 364 में क्योंकि कोर्ट अब ये डिसाइड करेगी उम्र कैद मिलती है उनको या उसके करीब की कोई सजा उनको दी जाती है। इसके अतिरिक्त कौन सी ऐसे प्रावधान हैं जिसमें मतलब वो अभी दोषी पाए गए हैं और इसके कौन सी सजा उन्हें मिल सकती है? देखिए वैसे तो इसमें काफी सेक्शन है IPC के, मगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो अपहरण का 364 का मामला है, तो उस पे सजा होनी है इनको। बाकी इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं जिसमें इनको मृत्युदंड भी हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे इन पे? मतलब पहली बार 40 साल में उमेश ये जो पाल के अपहरण में अतीक अहमद को सजा मिली है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको सजा का जो दंड है, कितना दंड काल है, वो कितने का होगा? आप बताइए। 364 इसमें हीनियस क्राइम है। इसमें सारे लोग जान रहे हैं कि देखिए सारी जितनी भी धाराएं लगी हैं सब नॉर्मल धाराएं हैं, बाकी एक हीनियस क्राइम 364A और उसके साथ साथ 120B का इंक्लूजन हुआ इसमें हुआ है। अब इसमें आजीवन कारावास ही होगी कम से कम। और बाकी आपने कहा क्या हम पहली बार जो 40 साल में पहली बार सजा होने जा रही है, अब देखिए लोगों का भय खुल गया और न्यायपालिका पर लोग भरोसा जता रहे हैं। बाकी 100 जो मुकदमे चल रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लोगों का भय खुल गया। आप मेरे को इतना बताइए कि 40 साल में ऐसा क्या हो गया था कि न्यायपालिका अतीक अहमद को सजा नहीं दे पाई और आज ऐसा क्या हो गया कि न्यायपालिका ने कुछ करिश अपनाया है और 40 साल बाद इसको दंड मिला है? क्या बनना चाहिए? देखिए ये बात भी आप सही कहें, न्यायपालिका तो अपनी जगह, उसके बाद जहां आज पब्लिक रूलर में एक्टिव यानी पब्लिक एक्टिव हो रही है कि हम कितना भी हो अब तलवार पे भरोसा न करके कलम पे भरोसा करेंगे। अब जितने भी मुकदमे हैं लगातार उस मुकदमों में गवाह आता जाएगा और गवाही देता जाएगा। मैं और लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए सर कि क्या हुआ है? 40 साल बाद इतिहास रचा है। अतीक अहमद जिसकी तूती बोला करती थी यहाँ पर। All right, that you were getting live
visuals and all the happening from ground zero there. But remember, the big breaking news at this hour is that Atiq Ahmed has been found guilty in Umesh Pal kidnapping case, and what we are learning from ground is that the maximum sentence that can be awarded to him is a life sentence. But we at Republic TV will keep a track on all the developments. Quantum of sentence is the one thing that we will be keeping you updated with. But right now it's time to slip into a short break. Lots more on the side. This and of course more stories. Remember, storm over USA backing Rahul Gandhi is also one of the stories that we are tracking. And Atiq Ahmed has been convicted. The stories on next on to the bulletin we will be tracking on Republic TV. Stay tuned, don't go anywhere. Dramatic visuals coming from here at Jantar Mantar as the Congress youth protesters, Karyakartas are being detained by Delhi police officials and para forces over their protest here at Jantar Mantar where they were trying to march, and the visuals could clearly be seen as they were protesting against the disqualification of their leader Rahul Gandhi from the Lok Sabha. And now we'll show you that many youth leaders of the Congress have already been detained by the Delhi police official and are taken to the nearby police station. Saturday onwards only, the Congress is staging the nationwide protest is going on by the youth Congress leaders all over the country over the disqualification of Rahul Gandhi from the lower house of the Parliament, with the flags of Rahul Gandhi and Indian National Congress in their hands, who are protesting here at Manti House. Several protesters now they have taken the three-wheeler to go to Jantar Mantar, was the exact place where the youth Congress protest was called for. But they started their protest from outside Himachal Bhavan only. Divide, divide, divide. The opposition and the lobby did it during CA. They tried to do it again when Afghans were being evacuated. Tonight it is time to ask them why their secularism comes with a limited comfort zone. देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पे अशरफ को यहाँ पे ले जाया जा रहा है। आप देखिए लाइव तस्वीरें यहाँ पे रिपब्लिक आपको दिखा रही है। बरेली जेल से अशरफ को प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। For the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom of expression. 24 days after Rahul sought foreign intervention, United States now intervenes. Political storm as US comes out and Rahul support, BRS, BJP and the JDS unite against interference. Parliament Lok Jam continues, papers thrown at Lok Sabha chair again. Ruckus in Rajya Sabha. Such is the political frustration of Rahul Gandhi, that a promise he made to a newspaper and a magazine could not be fructified, and hence he continued with his tirade. Smriti Irani takes on Rahul in an unrelenting attack, calls Rahul politically frustrated.
A big setback for Sharjeel Imam and Safura. Delhi court says that they were first in the line of mobs. A gangster Atiq Ahmed convicted in the Umesh Pal kidnapping case. Quantum of sentence yet to be pronounced. Viewers, we're live and breaking this Tuesday afternoon. I'm Shivangi Shukla getting the latest. And the big news coming in right now is that gangster turned politician Atiq Ahmed and his brother have been convicted in the Umesh Pal kidnapping case. The quantum of punishment, though, is yet to be pronounced, viewers. And this is the big breaking news coming in. And remember that this is coming in as he was brought to Prayagraj just yesterday for the court hearing. Now, Atiq Ahmed, his brother, have been found guilty in the 2007 Umesh Pal abduction case, viewers. That's a big news coming in. We are yet to wait for the quantum of sentence, viewers. That is yet to come in. In fact, let's go to Piyush. Piyush is covering the story from the ground. Piyush, the big question right now is, and if you could tell our viewers also what the latest is that now that Atiq is guilty in the Umesh Pal abduction case, we have to wait for the quantum of punishment, which is yet to be pronounced. He has been made a convict. He has been made a convict after more than 40 years. Now it's going to be interesting to see that what pronouncement of punishment is going to be given to him, and more importantly, will this lead to more such mafia dons being reined in by the judiciary, by the state administration? Back to in the studio. हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। अलग अलग धाराओं में ये देखा जाएगा और तय किया जाएगा कि कौन सी धारा में सजा यहां पर दी गई है। 364A जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतीक का परिवार भी लगातार कानून व्यवस्था से यही अपील कर रहा है, यही उम्मीद कर रहा है कि आजीवन कारावास नहीं बल्कि मृत्यु दंड देना चाहिए ऐसे दुर्दांत अपराधी को, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई। हालांकि मामला अलग है, मामला ये अपहरण का है, लेकिन हत्या का मामला भी अब आगे चलेगा कि किस तरीके से मुख्य आरोपी जो है वो अतीक है, उसका भाई अशरफ है, जेल में बैठकर हत्याकांड की साजिश को रचा गया। उसके तमाम जो साथी थे और असद को भी लगातार ढूंढा जा रहा है। उसका बेटा कहां पर है ये पूछा जाएगा। सलोनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सलोनी, खून के आंसू इस दुर्दांत अपराधी ने प्रयागराज की जनता को रुलाया है और आज खुद रो रहा है। All right, viewers, so right now we just saw that big news coming in right now from an under trial. Atiq Ahmed has now become a convict. Remember that the gangster turned politician is now found guilty in the Umesh Pal kidnapping case. Viewers, these are the back-to-back updates we're getting for you right now on Republic TV. Umesh Pal was a prime witness in the murder of the BSP MLA Raju Pal in 2005. He was kidnapped and allegedly intimidated and turning hostile in the case, viewers. So that is the big story we are breaking for you right now. Let's go back to Piyush. Piyush, this is a very big development coming in because after being under trial for so long, the former MP has now become a convict. Piyush. You rightly mentioned that after 40 years, a person who was feared over here in this part of the world, a person who was having big political links, today has met his fate and he has been convicted as per the court of law. It is now going to be interesting to see that what exactly would be the quantum of punishment which this person, Atiq Ahmed, and his brother Ashraf Ahmed and his accomplices will get. But more importantly, after more than 40 years, the justice has prevailed and this person who was feared for long has met his fate. I'm going to be speaking to some of the legal minds over here and try to get their opinion of what they actually feel about the entire incident. क्या नाम है आपका? जी, विनय ग्रेरी। आपने बताइए कि 40 साल बाद अतीक अहमद को सजा मिली है, आपको मतलब क्या लगता है इस मामले में? इस मामले में जो है देखिए, माननीय न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है और माननीय न्यायालय तथ्यों को, परिस्थितियों को देखते हुए जैसी भी है वही निर्णय स्वीकार है। 40 साल क्यों लग गए? 40 साल से ज्यादा क्यों लग गए और ऐसा क्या कारण है कि अतीक अहमद और ऐसे कई सारे माफिया डॉन
उत्तर प्रदेश में काफी देर से बाहुबली के रूप में विराजमान है, ऐसे क्या कारण था? देखिए, जैसे लास्ट में होता क्या है, किसी सजा याफ्ता होता है, सजा देने की जो एक प्रोसीडिंग होती है उसमें एक ट्रायल होता है। ट्रायल लंबे समय तक चलता है। ट्रायल 40 साल लगते हैं? नहीं, 40 साल नहीं, 17 साल लगते हैं। 17 साल लगते हैं। वो जैसे दूसरे मामले में होगा। अभी करंट का जो मामला, उसका ट्रायल संक्षिप्त करके उसी बिहाफ पे जो उसको सजा हुआ है। और जैसे जो आप 40 साल की बात कर रहे हैं, तमाम आपराधिक गतिविधियां, इन लोगों के तमाम आपराधिक 100 केसेस से ज्यादा इसमें सम्मिलित है। लेकिन आप जो सजा याफ्ता हुआ उसका तत्कालिक जो रहा होगा, जिससे भी कोरिलेट कराई होगी कोर्ट, उसमें उनको सजा याफ्ता हुआ है। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में कि मतलब आज 40 साल बाद वो किसी केस में अतीक अहमद दोषी करार हुए हैं, क्या डर का माहौल जिसमें मतलब लोग उनसे डरते थे, आज वो डर क्या कम होगा? नहीं, डर तो कोई कम नहीं होगा, लेकिन ये सजा तय है उसकी। सजा कितनी तय है, कितना मिलेगा उनको? आई थिंक 10 साल या आजीवन कारावास। 10 साल या आजीवन कारावास। क्या मैं समझ सकता हूँ कि काफी जो मर्डर्स के मामले उन पे दर्ज है, उनमें भी उन पे कार्रवाई होगी? क्या मैं समझ सकता हूँ कि आज जब वो 40 साल बाद दोषी करार हुए तो शायद जिन मौत के केसेस हैं जिसमें मतलब वो सम्मिलित है, उन पे भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, सब पे कार्रवाई होगी, शिकंजा कसेगा सब। I'll have some more people over here. Sir, what exactly do you feel about the entire incident? After 40 years, a person with the influence of Atiq Ahmed has been made a convict. What does this tell about our state of judiciary, and will this state of judiciary in Uttar Pradesh and India gain courage now to rein in more convicts like Atiq Ahmed? See, your part of the question is absolutely perfect one. But one reason is clarified. Until the jurisdiction of the judiciary comes into play, when the police officials get the accused people before the court of law. That has not been done as before. What has been done in the very shortest span of time, the things had been taken into consideration. The accused who are being accused of the offence they committed, those were brought before the law of justice, and at the same time the court has taken... there's a long argument, and I'll talk about this later, that lack of coordination between the police and the judiciary always results in people like Atiq Ahmed, getting scot-free. That is besides the point. But today I want to just understand one very important point from you, is that why does it take so long for people like Atiq Ahmed to be convicted, and now with this judgment coming in, where he has now been made a convict, can we expect that more people like Atiq Ahmed would be reined in? See, that's a very question that is totally on the part of the police forces. They have been working under... What accountability does judiciary have? Until the accused are brought before the judiciary, then only the things are government. You can well imagine the person who has been a sitting MLA, a sitting MP, how the things have been transformed and taken into consideration by the people who are itself in the government. How do you expect a government and the police officials will be working against the person who's an MP, sitting MP and a sitting MLA? We cannot expect the police officials raising their voice against the sitting MLA or the MP concerned. So that is the main coordination that is lacked. So you just saw over here that one of an eminent lawyer over here in Prayagraj court just mentioned that why Atiq Ahmed, people like Atiq Ahmed, who always, because of not only their criminal links but also because of their political links, go scot-free. It is now very important that this judgment would lead to more criminal elements like Atiq Ahmed being reined in. Will this get more people coming out and gathering courage like what late Umesh Pal did against Atiq Ahmed? Only time will tell. Back to the studio. Right, Piyush. Piyush is getting us all the top details right now. And Piyush, as you get us top details, we have a large team of reporters on ground also covering every vantage point for us. I just want to come back to you, Piyush, and ask you one simple question, and that is the kind of security that we are seeing. We saw a huge number of security personnel which are present at the spot, even outside the central jail. It shows that, in fact, the authorities had made sure that the entire city was on high alert before this sentencing had come in, Piyush. Take us through the kind of security which is on right now in Prayagraj. Well, you rightly say, Shivangi, that there was actually a heavy police deployment and not only police officials from Prayagraj police force, but also a large number of officials from Rapid Action Force and other paramilitary forces were also present over here. And this only tells you that why
why are people like Atiq Ahmed have been thriving for long? For long, these people have had criminal links, and later they amplify it into having deep political links, because of which their influence only rises and they become very powerful. And when law finally begins to take action against these people, there's always a fear that their followers would cause a lot of law and order problem. And fearing this, there was today a heavy security of people present over here to make sure that all of the judgments, all of the processes of Atiq being taken from Nani jail to court were carried on smoothly. But we have to realize one thing, that these things cannot be made a new normal. People like Atiq Ahmed should be treated like a normal criminal, and ultimately the law should find its way of dealing with such people. Back to you in the studio. Right, Piyush. Piyush getting us top details right now as a tight security arrangements are in place in Prayagraj. Like Piyush is saying, heavy security there present at the spot. And right now, coming back to you, Piyush, because I want our viewers to really understand what has happened. This is the Umesh Pal kidnapping case. We are still waiting for the quantum of punishment. Do we have any estimate of the time which it will take for the quantum of punishment to come in? Well, we are waiting for the quantum of punishment to be pronounced. In fact, what we are going to be doing is we are going to be speaking to some of the legal minds over here and get a sense of what actually they feel about the entire matter. Sir, when can we expect the pronouncement of the judgment, pronouncement of the punishment to come out? 10 years. 10 years. When is the pronouncement going to come out, sir, officially? Has it come out? नहीं, अभी तक तो नहीं आया ना? कब तक उम्मीद है हमें आने की? लंच के बाद या 3 बजे के बाद तक ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन 10 साल तक की सजा कंफर्म है। आपको लगता है कि तय होने की लीगल माइंड के दौरान? हाँ, 10 साल से। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि किडनैपिंग के अलावा और कौन से केसेस है जो उसमें मतलब आज जो है किडनैपिंग का ही मामला चल रहा है। अभी तो उनके ऊपर 302, 307 ऐसे बहुत रंगदारी के मामले भी बहुत। कितना टाइम लगेगा उनको इसमें भी दोषी करार होने में? अब कोर्ट इनके ऊपर के शिकंजा कस रही है, अब धीरे धीरे इनके गले की कोर्ट शिकंजा कस रही है। इतना टाइम क्यों लग रहा है सर कोर्ट को शिकंजा कसने में? अभी तक सरकार का भी कुछ ऐसा दोष था जिसकी वजह से तेजी से प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं कर पा रहा था, और इस वजह से इन बाहुबलियों के खिलाफ बहुत तेजी से मुकदमे प्रोसीड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही आप देखिए कि उसका प्रभाव नजर आने लगा, और अब बहुत जल्दी ही जल्दी आप लोगों को नए नए जो मुकदमे और भी इनके ऊपर दर्ज हुए हैं या पहले से चल रहे हैं, सब में प्रोसिक्यूशन तेजी से। हम तो बस यही चाहते हैं कि हर एक सरकार माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि उत्तर प्रदेश असली में उत्तम प्रदेश बने। सो you could see the people over here, you could see the legal minds over here. What we've been told is that the pronouncement of the case, pronouncement of the quantum of punishment is going to come out very soon, and we expect that for a person who had been escaping from the clutches of law for long, he would be given the strictest of strict punishment for the crimes which he's committed. But yes, today a very important day for the judiciary over here, not only in Uttar Pradesh but also in India, because a person who was feared, a person who still holds a lot of significance today, has been convicted. And now we are all waiting that what is the quantum of punishment which he is going to be given. Back to the studio. Right, Piyush is getting all the top details right now. And right now, gangster Atiq Ahmed, remember viewers, his brother, 8 others, all have been found guilty in the 2006 kidnapping Umesh Pal case. Remember that the Umesh Pal is a prime witness of the 2005 murder of BSP MLA Raju Pal. Viewers, getting these top updates coming in right now. And Piyush, if you could tell our viewers a little bit more about how Atiq Ahmed has approached Supreme Court not once, not twice, but multiple times. The last time, and that was a big breaking news which had come in a short while back, the Supreme Court has dismissed Atiq Ahmed's plea for protection in the UP police custody. So that just came in. Earlier, Atiq Ahmed had moved Supreme Court against a transfer to the UP jail where he is lodged in now. So he himself has been trying to go to the Supreme Court and trying not to even come for his hearing. But of course, now law has taken its course and he has been convicted.
Piyush. So you rightly mentioned, Shivangi, that Atiq Ahmed was very fearful when he was first being taken from Sabarmati jail and was being presented at the Nani jail over here in Prayagraj. And the reason why he did not want to shift was simple, because he feared that he is going to meet the same fate as what was met with Vikas Dubey, another gangster, and he would be killed in an encounter. So this was one fear he had expressed. However, nothing of this kind of incident happened. He was brought down very safely, and he had also put up a petition at Supreme Court in which he has stated that he does not trust being in the custody of Uttar Pradesh police, and he fears for his safety. But however, that has been dismissed, and you can now really get a feeling that this is all also a theatrics. This is also a ploy by people like Atiq Ahmed to make sure that they escape from clutches of UP police. We are going to keep track of all the happenings in the court where Atiq Ahmed has been made a convict. What is going to be the pronouncement of the punishment which is going to be given? All this is going to be given to you by the Republic Media Network. Stay tuned as we meet you on the other side of the break. Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. Saturday onwards only, the Congress is staging the nationwide protest is going on by the youth Congress leaders all over the country over the disqualification of Rahul Gandhi from the lower house of the Parliament, with the flags of Rahul Gandhi and Indian National Congress in their hands, who are protesting here at Manti House. Several protesters now, they have taken the three-wheeler to go to Jantar Mantar, was the exact place where the youth Congress protest was called for. But they started their protest from outside Himachal Bhavan only. Divide, divide, divide. The opposition and the lobby did it during CA. They tried to do it again when Afghans were being evacuated. Tonight it is time to ask them why their secularism comes with a limited comfort zone. देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पे अशरफ को यहाँ पे ले जाया जा रहा है। आप देखिए, लाइव तस्वीरें यहाँ पे रिपब्लिक आपको दिखा रही है। बरेली जेल से अशरफ को प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। Dramatic visuals coming from here at Jantar Mantar as the Congress youth protesters, Karyakartas are being detained by Delhi police officials and para forces over their protest here at Jantar Mantar, where they were trying to march, and the visuals could clearly be seen as they were protesting against the disqualification of their leader Rahul Gandhi from the Lok Sabha. And now we'll show you that many youth leaders of the Congress have already been detained by the Delhi police official and are taken to the nearby police station. Saturday onwards only, the Congress is staging the nationwide protest is going on by the youth Congress leaders all over the country over the disqualification of Rahul Gandhi from the lower house of the Parliament, with the flags of Rahul Gandhi and Indian National Congress in their hands, who are protesting here at Manti House. Live visuals coming in right now from Prayagraj, UP, just after Atiq Ahmed, his brother, have been found guilty in the 2007 Umesh Pal abduction case. We're getting these visuals coming in right now. Fresh updates coming in on Republic TV at this point of time, and we are still waiting for the quantum of sentence to come in. Now, those are the visuals from inside the court.
These visuals are from inside the court where you can see Atiq Ahmed and Ashraf, who are convicted in the Umesh Pal case. Viewers, these visuals coming in right inside the court. And like we just told you, we are waiting for that quantum of sentence to come in. It might come in approximately 1.5 hours from what we understand. And viewers, remember that after being on under trial for so long, the former MP is finally a convict right now. And this is coming in after the gangster turned politician has a history of over 4 decades of having criminal cases against him. And he has over 100, I repeat, he has over 100 criminal cases against him. Still waiting for the quantum of sentence to come in at this point in time, viewers. This is the Umesh Pal, a kidnapping case. In that, he has been convicted. Now, remember that Atiq was also allegedly involved in the killing of Raju Pal, who was shot dead in 2005. And then we also know that Atiq and his aides allegedly abducted Umesh Pal in 2006 and forced him to give a statement in court in their favor. And Umesh Pal is a key witness in the former BSP MLA's murder case. And later on, he got a police complaint registered against Atiq in this regard, and the case was going on. Then Umesh Pal was gunned down outside his Prayagraj residence on Feb 24th. So there was a series of events which had taken place. So in this particular Umesh Pal murder case, Atiq and his brother and 8 others have been convicted. This came in after Atiq Ahmed was shifted to a UP jail, that is the central jail there. We're getting many visuals coming in right now, both from inside court and from outside the court. We can see, and as all our reporters are on ground, they're telling us there's a heavy security deployment there. Let's go back to Piyush. Piyush, now we are seeing visuals coming in of Atiq, who has been convicted. We can see those visuals from inside the court right now. Do we have any kind of idea what we can expect next in the next 1 hour? Because we know that you were speaking to some legal minds. They said that the quantum of sentence might come in around 3 p.m. So yes, Shivangi, what I can just tell you is that when you are seeing such a historic moment in a judiciary, and a moment like this rarely comes when a person who has escaped from the clutches of law for more than 40 years, a person who many people feared, many people knew that he had criminal antecedents, but he was not convicted in any of the crimes he had committed. Today, when he's been made a convict, this is actually very historic, and for this, you have to give kudos to the UP police, and you should also give kudos to the judiciary for taking a decision. But now, all eyes are on what exactly would be the quantum of punishment that would be given to Atiq Ahmed. I'm over here with some of the legal minds, and I will speak to them and understand their views about what they actually feel about the entire incident. Sir, this is actually a very historic day for, Prayagraj court, and this is actually a very historic day for Indian judiciary per se. I first want to know from you that he's been made a convict in one abduction case. What actually is going to be the quantum of punishment which he can be given by the court? See, legally, if you see what section says, it says कि in 364A जो है ये इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और 10 years का भी है. लेकिन चूंकि ये हार्डन क्रिमिनल है ये लोग, तो इनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए. और इसके अलावा और भी कई ऐसी अन्य धाराएं हैं जिसमें मतलब वो अभियुक्त है. हम चाहते हैं कि वो इनकी वाली कि इनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए इसके अंदर. लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्या बताता है, और इस बात को मैंने कई अन्य लीगल माइंड से भी मतलब रेज किया है कि एक आदमी पहले तो एक आदमी को मतलब अबडक्ट करता है, उसको टॉर्चर करता है और बाद में उसको मार भी देता है. ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्यों होता है कि पुलिस और जुडिशरी टाइम फ्रेम में ऐसे आदमियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती? मतलब कहना आसान है, लेकिन आप मुझे बताइए. एक्शन लेती है, ऐसा नहीं है. आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है. हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें इन चीजों में, और टाइम लगा भी इसीलिए, लेकिन देर आए दुरुस्त है, मैं तो ये कहूंगा यार. क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब आज अतीक अहमद की बारी है, अब ऐसे कई अन्य माफिया डॉन्स भी है जिनके आप बताइए सर, व्हाट एग्जैक्टली डू यू फील? एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से? All right, we're taking a very short break right now. Much more coming up on the other side. Mafia Don Atiq has been pronounced guilty, waiting for the quantum of sentence.
Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. Saturday onwards only, the Congress is staging the nationwide protest is going on by the youth Congress leaders all over the country over the disqualification of Rahul Gandhi from the lower house of the Parliament with the flags of Rahul Gandhi and Indian National